days? Yeah. Today my internet services are pretty good. Yesterday it was just because of exam in Rajasthan. I was unable to join the session. So I'm sorry for that. No, it's fine, sir. Yeah. So thank you once again, ma'am, for your kind introduction, and good morning, everyone. I will be talking. I am sharing my presentation. I believe my presentation is visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. All right. So today I will be talking about majorly three things. What exactly the importance of IPR registration for industries, and since you guys all are coming from academic background, so you all are pursuing research. So what's the importance of IPR for research guys also, and like then how to identify a potential product process while dealing with when we should approach for IPR registration and when not to go for it. So that's the whole agenda of my talk today. And I request you all to be open-minded. Feel free to ask whatever kind of question you want to ask, because it would be beneficial more when we will be interacting more. So that's my main intent here. So that's how I want to begin. You can see that there are kind of properties we all know about the typical properties, which is gold, land, house. But then there is a other facet of it, and which is intellectual property. Now, when I talk about what exactly the importance of intellectual property, I will be awareing that it's having a global reach, it's having a wider reach. I cannot show my goal to everyone at all time, but I can show my intellectual property to everyone. My intellectual property will be accessible from any place of this world, but my real property won't be. So in a way, intellectual property is having a wider reach. Now, if you can see these images, the left side is a gold thing. It's a typical real property. You can't carry over anywhere. Like you can carry over, but the wider reach won't be available. But when I talk about the intellectual property, for instance, I'm showing two logos. One is related to Rajasthan Royals, which is an IPL team, and the other is coming from an education startup, which is Bajus. So you can see the reach. They are the property. These properties are owned by these particular entities, but still it can be visible. It can be used by, or people can have access to these properties from anywhere in the world. And why I have put this Bikaneri Bhujia in between, because it's a combination of a real property and an intellectual property. I will be dealing how it is a combination of a real property and intellectual property. But again, so in present times, in modern times, we all are related with these real property and intellectual property. Now, when talk about industries, how these industries approach to build intellectual property more beneficial, more revenue generating than the real property, we'll be discussing in my upcoming slides. So this is one another thing. So this is a photograph of a fashion event, and you will be surprised to see that how these models wearing dresses, their walks are related to intellectual property, and their show is coming into legal purpose when it talks about the IPR, how their show got stopped, or what are the processes happened just because of these dresses and all those things. So the whole purpose of showing all these images is to highlight that there is intellectual property is very essential for us, very crucial for us, and we need to protect it at all levels. Now, the typical intellectual property rights definition starts from anything which we are generating using our intellect. That's the basic mantra behind the intellectual property. So when I talk about a typical definition for this, which is says that the owner, the guy who has invented the thing, the guy who has used his intellect, will be having the exclusive rights. Exclusive rights means he will be the sole owner of that intellectual property, and that will be protected. So if someone wants to use it, someone wants to copy it, he needs to take permission from that individual who has used that his intellect to develop that thing. And that's have a variety of range, starting from your inventions, when you write research papers, when you write books, when you write codings. For instance, you have a college name also.
that the college logo is also a intellectual property right for of your college. So it's having a wider reach. And why it helps you? So when it is for instance a company is there, a company wants to raise funds, industry wants to get like when the company shows their annual reports to the shareholders in share market, at that time this help them to raise funds. This give the confidence to the shareholders. All right, these guys are working in this kind of assets which are going to be a revolutionary in upcoming times. Then they give you the funds. So that's one advantage. The other thing is that it helps you to do that negotiation and techno. For example, I will quote you. You all heard about Nokia. So there was a company which is known as Nokia. They brought these mobile phones. Nowadays, Nokia is nowhere in the world. In terms of, if I talk about in terms of the product, but if you talk about the existence of Nokia, yes, it is very well existed. And how? Just because of intellectual property rights. Nokia is having so many intellectual property rights. The company who are selling their mobile phones, who are selling their technologies in the market, coming even not from the mobile industry, coming from automobile industry, they are taking IP from Nokia, and that's how Nokia is still existing without the existing of any product. That's another advantage for us, that to know that how intellectual property right is giving benefits to the companies. And similarly to individuals also who develop a lot of things and wants to promote the IPR, wants to promote their technology, IPR becomes a significant tool for them. And when you talk about your business is always like, when we talk about this NAC rating, when we talk about the ranking of the colleges coming across India and globe, you will understand that which college goes on the top, who is having more amount of IPR. Now, why it is having a significant importance, that why that college is giving a higher ranking just because it is having more IPR, more patents? The reason is that these guys are having some extra edge. They are working on something which is futuristic. And that's the main motto. We need to tell the students who are coming to the institute, we have to motivate them to use their intellect to develop something new, to develop something which is going to play a great role in upcoming days. So that's give them the extra edge. And similarly to the companies also, this gives them extra edge while competing with their competitors. It makes your business profitable, as I quoted that Nokia example, that yes, business people will able to know more things. They can easily generate more revenues because your shareholders, your investors having more confidence, you are working on a greater thing. The other advantage is that it gives a brand building also. So it gives you a global recognition. For instance, if I talk about champagne is just a local product which coming from a village in France which is known as Champagne. But everyone when talks about white wine, he talks about that champagne. Oh, that's a phenomenal brand of a white wine. Now a local product which is coming from a local village is having a lot of recognition. So that's again a way to understand the importance of IPR in brand building. And in the end, it gives us a assurance to the end customers or the consumer that look, I am getting a genuine product. I am getting like a confidence to the end customer. Okay, this product is pretty good because it's IP protected. I can use it, and there should not be any doubt. So that's one. Now this is one example. This is a old image of a camera. Nowadays, like hardly someone use all these cameras. So you can understand that one product involves a lot of IPs. So if I talk about the lens, the technology which is behind the lens, how I will be zooming it, how I will be like capturing the image, just by one click I will be able to capture that particular movement, that particular background, the scenery. That technology is covered under patent. Now the image which will be generated, that image will be captured under the copyright. And the logo of this company, the logo of this the company is trademark registered. And then the design feature, how it looks like. There are curves on this camera, then there are the edges on this camera. It makes it particularly unique. That uniqueness is covered by design registration. So this picture shows that how one product involves 4 5 IPRs. Similarly, when you do a research work, your research work involves like you write a research paper on particular research work. That research work is a part of your copyright.
And similarly, when you go and file a patent on something over which you try to address a problem, and that problem, for that you have used something new which nobody has tried to address that problem, that newness is a subject matter of a patent. So in your research paper you are getting patent, you are getting copyright also, and if you want to sell that research work to the world, you start a firm for that, then that firm name can be a subject matter for copyright, for trademark, sorry. And then how, for example, if you developed a product while addressing that problem, so that product is again a subject matter for design. So that's how like intellectual property rights are having bigger protections, and one product, one solution to a problem can give you lot of IPRs which will help you to generate revenues. And this is how we do deal with things in our industries also. For example, if I'm working in Sony and I want to launch a particular camera, I will be dealing with all the aspects. Okay, these are the technologies which are involved in this camera. I have to protect it by patents, because I don't want some of my competitors do the reverse engineering and use the same technology. So I will be covering all that technologies through patents. Now I will be launching like my product with a certain name. Here the Sony is launching with a cyber shot. Now I want to launch with all possible names. So I will be protecting all possible names by which I want to launch my product through trademark. Now this is one particular design, but I will be launching 5 6 similar kind of cameras. So how I will be protecting those all 5 6 designs? I will be protecting through designs. Now the copyright will be with the person who will be capturing those images, but still those, even if I am doing the advertisement, I have taken some pictures, how I will be protecting them? I will be protecting them through copyright. So all these things help industries to protect their product, which is coming out from a lot of research and development. Coming from, you talk about any industry which are working, they put lot of efforts for developing a single product. It takes like years, sometimes decades to develop a particular technologies. So that's why the IPR protection plays a significant role, so that they can reap out the benefits for investing so much time into the development of that particular product and the technology. So that's how we deal with the IPR. Now this is one such a like I want to explain the same thing, how the process goes on. For instance, like when we have something invented, when we have developed something, or we have like whatever you have done, even if you have done some sketching or something, you have wrote some content, you have wrote some blog, all these things will be falling under these four categories. Either you have invented, you have invested, you developed, or designed the design, content development, all those things. So you will become like inventor, investor, or owner. So how it all started, it started always with the product or a process or content. So these three things will become the genesis of your IPR. Either you should have product, process, or content. If you have just idea, look, I want to do this thing by this thing, then this is not going to be protected under IPR. So you need to find these three things at least to begin your IPR journey. Now when you start with that, you follow that process, and with that process, in the you have these three things. One of these three things you process for the second step, and then after you start taking the protection, it is granted to you, you will start getting revenues, and with that revenue you again want to develop it, and the chain begins, the circle begins, and then slowly you start generating a lot of revenue. So it helps the society also in development of technologies and all. Now this is the basic structure, which is like to explain you how actually the organization is structured in India. I believe few of them are aware about this. I'm just uh, like repeating the same thing, that so if you decided you want to file patent, the institute right now which where I am dealing is in Haryana, so you will be filing your patent in Delhi patent office, because that's where the locality is. If you want to file design, the only office in India is in Kolkata, but there are online portals also. So nowadays it is quite convenient for people to file. Just go to the website, which is IP India, and then you can go and approach the things. You can begin the process. But this is how, like all these places where we have the system, we have like patent office, design office, trademark office, GI office, copyright, and the semiconductor office, and there are some institutes
offices which maintains this database, so that if you want to see that whether whatever solution I have thought of, whether someone has thought of in previously or not. If not, then you should proceed. If yes, try to find out how you can improve on it, or how your solution is better than the existing solution. So for those data, you need a database, and that database is managed by a government office, which is in Nagpur. This is a broad structure, and all these things of IPR activity comes under the Ministry of Commerce and Industry. So that's a broad organizational structure of IPR in India. Now, when I talk about this is this these Venn diagrams are explaining how important IP is and what actually the importance of IP. So one part of it is like you are creating and you are innovating. So which we all do every day. We have, like, for example, this is a pen. Now just imagine a situation like 100 years back, pen was having no cap. So I thought that okay, whenever I put it pinch me. So I thought of let's do something. Let's Because it's pinching me, I have thought of a cap. So what my creativity is, what my innovation is, that I found a problem which is pinching of this pen nib, and the solution lies in the cap, to provide a cap. So what I have done, my creativity lies in that I have developed a cap. Now that is very obvious, but 100 years back it was not obvious because nobody was addressing it. So there lies your creation. Now when you have created something, we need to generate, because you want to protect it, you want to show it to the world, look, I have created it. How you will approach the other ways, that you people started recognizing you, that Mr. X has developed this cap for this pinching, protecting the pinching of the nape. And then slowly when hundred of people, because when you see like crore of people uses the pen for writing work and all, so there's a huge potential for revenue generation. And when there's a huge potential of revenue generation, there are chances that someone will try to copy it. So I need to protect it. So all these three things will be protected by IPR. So my creation will be protected by patents. My I will be getting recognition through patents. I will be generating revenues through patent, because nobody will be able to copy it. So that's wholesome package will help. IPR package will help you to generate, to protect your innovation, to generate revenues, and to give you the better recognition. That's the whole understanding of this diagram. Now, so this is something I believe that these are the factors which might help a researcher or a faculty who is in academics to develop their IPR. So first of all, a faculty should try to, like, for example, I come from a mechanical background. It would be more easier for me to address or to understand the problems coming from the mechanical background. If you're coming from physics, if you're coming from fashion technology, if you're coming from chemistry, you will be having a better understanding of the problem which are in particular sector, particular domain. So that's the one factor which is important. Now the approach, I'm not diminishing anyone, but my understanding that the attitude towards innovation should be there. It's not like that once I have achieved a particular designation, once I achieve, that attitude ends. That should not be there. And we can easily understand that why European and American professors have that approach. That look, even I'm a 50-year-old guy, even I'm a 90-year-old guy, or even I'm a 20-year-old guy, I will be fighting to understand, to develop new things. That should be the approach for addressing that problem. Because somebody has not addressed a problem from last 50 years, it doesn't mean I should also skip that. Give a shot to that. And when I talk about, once you have two these other things, like you need funds for finding out the solutions, because you have to do a lot of experiments, you have to invest your times. So all those factors are the, like, you're beginning the foundation of your research work. When you talk about the academic domain, then you have to invest times. You need to have your research scholars who can put you into the development of that solution. And there are good amount of possibility that you won't be able to find a solution of that problem. You will be failing, but trust me that the solution will be, again, like, the failures will also be patent protected, or there will be a good IPR generation will be happening during that
that failures also, because even in that failures, for doing that experiment, for organizing that setup, you will be solving a lot of problems. So vis-a-vis when you are going for your IPR activity, you can go for your research publications and all those things that you can take in care of. So that's one way I believe that approach will be helpful for academic people for doing the research and IPR. And like when I talk about industry also, we generally have a similar kind of approach. The major part is that the industry won't go for the publication part, because the publication is not as beneficial for industries as IPR activities are. But yeah, a significant time goes into research development, because I particularly belong to a research development team of world #1 company. So we know, like, for example, we want to launch a product which is going to hit the market almost after 5 years. We don't know how people will be going to accept it. There are great amount of failures involved into, but still we go give a shot. And several time it happens, you never know what market like it, but still we have to maintain our sustainability, and we have to keep doing new things. We have to keep addressing the problems, the existing problems, the future problems, and that's how you develop the new things in the world. And all those things which are we are developing even after our failures are protected through IPR, so that our efforts never go into vain. So that's a significant way, or that's a way to understand that IPR is very significant to us. Now, since my topic is more related to patent, so a journey of a patent starts from invention. And like when I say what exactly the invention means, so in general way, which we say, or which a typical understanding is that it should be new, or but we have to understand that what exactly the legal term for, or the legal definition for this is, that any invention or any technology which is nowhere anticipated by any person, and how that anticipation will be judged by the government, the legal bodies, is through the publication, whether it is published in any document, whether it is known to anyone, whether it is used somewhere. If it is not, then that definitely your whatever you have developed, whatever solution you have brought to the to for addressing a problem, is termed as an invention. Like, so when I talk about what exactly patent is a exclusive right. As I talk, like IPR, most of the IPRs except one is are the exclusive right, which is always for an inventor and which is always for an individual. And it can be like, you can bought it, you can sold it, you can assign it depending on the requirement. And there are like, patent is having, now how exactly the patent process is. So you will understand that this is one way to understand. There are, I have done something, so I have find a solution. I have a confidence that, look, this is an invention, and this, I being an inventor, will be getting a protection. So I will be going to the government, or I will be sending someone. For example, like when we file patent on the name of a company, so the assignee of the company goes, and then the person will be going to the government and disclosing everything to the government. Look, sir, that actually that's the problem which I am addressing, and that's the solution. I have found it out, and I believe that solution is new. Please take my document. The government will read it, government will understand it, government will check it, that whether it is published, or whether it is used, or whether someone has, like, have used somewhere else in across the globe. And if they found out no one has done that, then they will give you the exclusive right, which is patent. And that's how the process begins. And once you get the patent, you will be the exclusive owner of that particular technology. But the again thing lies that patent is a territorial right. So, for example, I have done something in Haryana. I have developed a solution. I have filed a patent, and I got a patent granted in India. So my protection is limited to India. It's not like universal right. So if someone comes from America, copies my invention and start using in America, I can't sue him directly. So for that, I need to file a patent in America. I need to file a patent in Europe. I need to file patent in Australia, so that if I can protect my invention across the globe.
so that my protection will be universal. Otherwise, just getting a protection in one country won't be a good option. But it depends on the again, it depends on the technology, which technology you are dealing with. So that's that's one way to understand. Now, some interesting things about like patents. These are like, I think, no, not as recommended, but still I will share. So there was a 8-year-old kid who has developed this kind of 6-player circular chess. So generally in chess, 2 players only play the chess, but this kid has developed this chess board where 6 player can play. Now that's an interesting thing, and that's a amazing solution. It's a patentable, and he has taken a patent on it. So what was the problem he was addressing? That only 2 people were able to play the game, and there were other guys who also wants to play the game, but they were unable to do so. That the system was like that only. This guy has come, but this thought, all right, I will find a solution. He has made such kind of format that now 6 player can play a chess together. So we can understand that how people are addressing problem, which is very basic, which we also face in our daily life. But we sometimes come with the solution and we just let it go. This guy understand the problem and find a solution, and he went for the IPR protection, and now he's like, known in the world. So there are other examples also, so we can understand. Now this is just a small activity. I would request if any one of you want to answer it. Do you believe that cloud is a paid invention? Can I call cloud as an invention? If someone wants to answer, I would be glad. All right. So cloud is not an invention. The reason is because there is no problem solved by cloud. It is something which is natural. Nobody has used their intellect in development of that. It's pretty not natural. But if a cloud is artificial cloud or something like that, then there are intellect. Then the individual or the group of people has used their intellect. It can be called as an invention. Now, when I talk about car, so car is addressing a problem when that I want to travel from place A to place B, and I need something on which I can travel faster with a proper safe environment, and that's an invention. So car is an invention. Then I talk about video game. Yes, we were playing outside. Now I want to play inside on my television. I have found a solution that okay, that you can use video game and you can play on. That's again the solution. So it's an invention. When I talk about alarm clock, a clock, I want to wake up early in the morning. I don't have anything. I find something that all right, there's a something called mechanism by which I can be able to wake up early in the morning, and that mechanism I call it as alarm clock because I am addressing a problem. To the problem is to wake up early in the morning, then it's an invention. Now when I talk about fossil, it's already existed. So there is nothing, nobody has used their intellect, so it's not called an invention. That's pretty normal. And now, what actually make invention patentable? Broadly, there are 4 conditions which are universal. So that's the again benefit of IPR. If we talk about laws, most of the laws are like not similar in every countries. So there are certain conditions in India which are not similar to France. Then they are not similar to Germany. So every countries have certain things, but IPR is one such law which is very much similar across the globe. So if you go to file patent, you have to follow these 4 conditions. If you want to file patent in Japan, if you want to file this patent in China, Germany, anywhere in the world, these 4 conditions remain same. The parameters, the threshold of these four conditions will be varying in the countries, but the broadly all these will be falling under these 4. So the first one is novelty, that whatever your invention is, it should be new. It should not like that. Like for example, I gave you this pen example. This cap was new 100 years back, nobody was thought of. So that's how it becomes new. Then inventive step, like there should be some incremental changes, there should be some significant changes for the person who is coming from that thing. And that
The third part is the industrial applicability. Now I have provided a solution, but that solution is so complicated that I cannot produce it in a repetitive mode. Then I will be failing to achieve that achieve the facet or the target which is made under this industrial applicability. And there are certain things which are excluded. For example, a solution which is related to human, a discovery. So all those things, there are the list which is depending on the particular country. So that list we have to taken care of. Now the patent is always given for 20 years. So for instance, I have patent filed in year 2021. Now that patent is going to expire in 2041. So that's the, and I will share one interesting example. Like we all face this COVID times, and in COVID times we all were using masks. So there was a company, I don't want to take the name of that company. That company was having a patent on that mask, and that patent was filed in year, I guess, 1999. So that company has filed patent on that kind of mask, that where we have all these oxygen and all those things. Now that patent got expired just few months before the COVID hit the world. Just imagine the situation. Just imagine the situation. I'm not talking about the human rights and all those things. What if that company continues to hold that patent? What if they file just 2 years back or a year back? What, think about the revenue generated, because the mask, the way these mask production happens, everyone was selling masks, people were getting masks. You can't go out. It's still do today also. You can't go out without mask, and that was patentable. So you have to imagine, like, that's how IPR is. Like you can get protection 20 years for 20 years, and that's an amazing time period that you can get a lot of revenue out of your thought process which you have like developed after a lot of research. So that's one way to understand that it's something which is amazing if you work on. So these are the things which I talk about. Like in India is not patentable. For example, computer program software per se. So it means a typical coding is not patentable. Now it doesn't mean that I have developed an app, I won't be having any IPR protection. I'm talking in the sense of patents only. So a typical coding will not be patent protected. It will be protected through copyrights and some other IPR, but not patent. Now talk about the business method and medical method. So business method is also not patentable, because if business method is patentable, Flipkart will not be there, because Amazon and Flipkart is having a similar business model. If business method is patentable, Ola will not be there, because Ola is having a similar business method. So there are several examples to understand why these similar business are existed. Now when I talk about plant animal, something which is related to these forms are also not patentable. And the traditional knowledge which we call as dadi nani ke nuske, so these are something which we are coming hearing from generation to generation, passing from one generation to the another generation. So all these things are also not patentable. So these are the few of these things which I can say that not patentable. So this is a like brief journey how patent, like when we talk about that, how industry approach. So the idea conception happens, which is all about like I have found one problem and I thought of a solution. So I am just figuring out how will I will be approaching. So when I want to start the approach, what, being an industry people, what we generally do, and I recommend to all the person who wants to go for your IP protection, is that search. Because if you start your research also, for example, your PhD scholar come with a problem that, sir, I want to work on a particular area. Now I believe you should start, okay, that's the problem, that's the solution, just give a search. I believe you guys will be doing through research papers and all, but just go for a patent search also, so that will help you that whether someone has done the similar thing already or not. This will help you to protect it. This will help you to, like, your protection of your resources for generation of the, like, you're doing the same work. So what's the advantage of doing the same work again and again? So that's very a crucial aspect to do the search just before your setup and everything. And once you are done, you will proceed for the filing, drafting the application part. Then you might, like, you can skip few of these steps also, that there's a possibility.
and then it will be published, and then there will be examination process. And if someone wants to oppose it, look, it's very obvious, it is known to the world early, then it is open for the opposition. And if you overcome all those problems, then finally you will get a grant. So that's how the things are, and these are the things which we required to submit to the government. So I need to provide government what exactly the invention, what in what domain it belongs to. For example, is it belongs to like automobile also, two wheel vehicle, four-wheel vehicle, or what kind of vehicle it is. Then if it is related to chemistry, it is related to physics, computer science. Then background means what exactly, what's the problem you are solving, what the problem this patent is going to solve. Then you have, if drawings are there, you have made some invention, you want to show it to the world, you can show those drawings. Then the description required to explain the process, to explain the problem, that to explain the solution of that problem. That's how I have solved that problem. And the most important part of a patent is claim, what exactly I'm claiming for, what exactly I want for. So that claims become a crucial aspect while you want. So like during the solution of a problem, you have find lot of things, you have done a lot of things, but what exactly you want to claim, you have to tell the government, look, I this is the problem, and I want to claim this pen. Now I don't want to claim there is a like particular holder inside this cap to hold this nib. I don't want to claim that, I just want to claim this cap. So that actually I have to tell the government, okay, that. And for all this purpose you need IP councils, you need patent experts, because they can help you and figuring out more what exactly you should claim. And the abstract is something just to tell the world, all right, this is the problem, this is the solution of my invention. So that's how the process is. The broad process starts, you go to the government or any government in India, outside India, that I want to file this patent, and it get published, it get examined, then it will be granted. If someone wants to oppose it, they can oppose it, and you have to renew it, because the term is for 20 years, and it is territorial. So for India, you will, like, if you file in India, you get protection in India. If you want to file in 50 countries, in 100 countries, you have to approach to those countries. So that's how the process is. Now this is the website, you can go to this website and you can apply for that. So if you want to note it down, you can note it, it's IP India. You can just Google it, IP India, you will be getting to that website, and then you can proceed for the filing process. You have to make an account. If you make account with your e-signature, digital signature, and then you can proceed, or else you can take a help of patent agent, patent councils. So that's how you can proceed. Now once your patent is like published, it will be look like this. So this is a patent of our Indian cricket team former captain or currently mentor of Kings 11 Punjab, Anil Kumble. So he is also an inventor, and he has thought of this idea, which is related to, like, when nowadays we are watching we are watching live streaming matches, and while watching a match I want to have details of a particular player. So how you want to get that, this Mr. Anil Kumble has provided a solution to that. So that's a beauty, like the guy who, because he's also an engineer and he became the cricketer and then the Indian team captain. So but he began to understand that there are problems and he can have a solution for that, and now he's protected that solution. And interestingly, this solution is protected only in those countries where they play cricket. So it is protected in Australia, it is protected in England. So these are the bigger countries where they play cricket, where the development of technology related to cricket happens. So that's how we are approaching, or we are filing the patents and developing the inventions. So, and once you get everything, it is granted. So a certificate will be given to the inventor, and that's how the certificate looks like. So that's related to this thing. And now when I talk about the global scenario, so a lot of patent filed across the India, across the globe. And you can see that why China is leading. China is playing significant role in development of technology, and which is very well evident. You can see the numbers, see the contribution of China. They have like take India is nowhere close to them. So we still need to work lot of in the particular development of technologies, and that work is required because
if you want to lead the world, you have to develop technology, you have to give a vision to the world. And how those things will be coming, it will be coming to the development of the technology, development of the inventions. And you can see why China is leading, why US are leading, why Japan. So all these are developed countries, they are phenomenal in technology development. So this shows the it shows in another aspects also, when we talk about the terms which are more related to politics. But yeah, they are way ahead in patents. Now when I talk about technologies, you can see China is working significantly in computer technologies, and it is again evident, like they have a companies like Huawei, Vivo coming, and then so, a lot of companies, technologies companies coming from China only, and their patent portfolio is huge. It's like enormous. And when I talk about Germany, Germany is pretty good in transport sector, which means like they build a lot of automobile technologies related to cars. And it is again evident because a lot of big great companies in automobile sectors come from Germany. When I talk about machinery parts, or electrical parts, it's again come from Japan. And then again, if we talk about their companies, so it is like you can easily figure out that why a particular country is dominating into particular technology. And we can see the companies, they sell product from that domain also. So that's how we can understand that. So when we discuss our plans, when we in industries, when we figure out, all right, this is how the global technological development is going to happen. So we figure out, all right, what are the areas where we have a scope to develop the technology, what are the areas where we can, just to like put little effort, what are the areas where we can put maximum efforts. So these graphs or these maps will give us that idea to develop that. Now you can see the involvement of patent in a particular vehicle. So this is a car coming from Audi, it's a EV car. But see, the just this is just few, and I'm talking only about patents. You can see one vehicle involve a lot of patents, starting from your wheels, start then the engine part, the motor part. Since it's a EV, it will be having battery part, how that battery transformation will happens to the wheel, then the motor, all those things is coming a part of patents. And if you talk about just single car, it will be having 100 of patents. And then there will be several trademarks, the design, how it looks like, how it windshield look like, how the glasses look like, how the door look like, how these wheels look like, the front part, you can't copy that Audi logo. So all these things involve a lot of IPR. So when we go into industry, and that's how you have to thought of, you have to rigorously understand, when a product comes in front of you, you have to think, you have to understand what exactly the new things, and how can I protect it, how can I get an extra edge over my competitors through IPR. So, and now this is one case which happened in India. It's a very interesting case. I believe you all heard about a vehicle comes as a Pulsar. So I won't be dealing much detail into this this case, but what I will be saying, that there was a Pulsar was launched by Bajaj Auto in 2003, and the similar kind of, so they have used DTSI technology in their engine. And that DTSI technology, similar technology, it was a patented technology, and the similar kind of technology was used by TVS. And TVS vehicle were ready to be sold out in the market. They it hit into the market, and Bajaj filed the case on it. And just because of that thing, because they said, look, your patent is infringed, you are infringing our patent, how can you sell that product? Just because of that, they have to take back all those bikes. So it was a loss of crores. Or for TVS, they have to roll out their bike which was already in market. And there was something like, what if they have fined that particular Bajaj patent, because that IPR awareness was not there back then, almost a decade back, more than a decade back. So that's the importance, like, why industry people are more focused about IPR, because we can't launch our product just like anything. For example, I have thought of this cap and I want to launch it. No, we can't do that, because there's several people other who are looking for our product, who are judging our product, who will be taking our product from market, checking out whether we are copying or not. All these challenges are there.
And that's how IPR plays a significant role for industries, for generating their revenues, for getting an extra edge over their competitors, and for their sustainability also. Now, this is something which is not related to patents, and this is more related to a broad domain of IPR. But I want to touch it because it's very interesting. That's called geographical indication. Now, we all eat fruit. So if you will be like, we have mangoes, we have oranges, we have bananas, onions, and you what I want to highlight to that all these things are also IP protected. So why it is IP protected? Because we have a particular thing. Okay, these things come from, like, orange comes from Nagpur only. Now, what if someone started selling orange coming from other place as a Nagpur orange? So those Nagpur orange, like the farmers who are cultivating all those things, will be feeling cheated. So to protect their rights is something called geographical indication. So it's all about, like, how you protect your traditional arts and all those things too. So IPR is involved all everywhere. Like when I talk about Punjab, Haryana, this amazing IPR comes, which is known as basmati rice. Now, why basmati rice is unique? What exactly? There are hundred of rice available in this country. What is special with basmati rice? So even like Punjab, Haryana are having that basmati rice tag, and Madhya Pradesh is fighting for that. They also want to sell their rice as basmati rice. The reason is the revenue. Basmati rice gives lot of revenue, lot of money to government, to the farmers who are producing it. So again, we need to protect it. We need to protect it because even Pakistan is also fighting for that tag of basmati rice. So why I'm highlighting this, that there are importance of IPR, and IPR is involved in every way, from our food, from our clothes, from the way we will travel, from the room we are sitting. So it's everywhere. So we have to understand the importance. And you can see that this is something which I talked in initial slides, that why Bikaneri Bhujia is a kind of, like, intellectual real property also, and intellectual property. So like we get the food, and like when we eat bhujia, it becomes a real property, but it's again a GI also. It comes from Bikaner. And why this bhujia is special? Because they are using water of Bikaner, and this water of Bikaner is having some unique characteristic which gives reflected into the taste of this bhujia, which is not coming in other bhujia. So I can make bhujia sitting in Jaipur, I can make bhujia sitting in anywhere in the world, but the taste which is I'm getting from that Bikaneri bhujia will not be there. And why? Because the water used in this bhujia comes from the Bikaner, and that's how it's GI protected. So even if you buy Bikaji bhujia, like, so you will see this logo behind that cover package. You can understand, all right, I'm getting a genuine product. But Haldiram also sells the bhujia, but they won't use this logo. And the reason is because they are not procuring it from Bikaner. So it's just a bhujia, but not a Bikaneri bhujia. So for Bika, and that's how Bikaji is getting an additional edge over the Haldiram bhujia, because they are using a GI tag, which gives them the more assurity to the consumers and customers that, look, I am getting a genuine bhujia. So now this is again one example of GI, that how people try to copy that. These are the, like, chadars which we use in our home. So what exactly the left one is the GI protected, and it's coming from Odisha. The right one is the copied one, and then how we have to understand. So like everywhere, it's again one case where everywhere the IPR is involved. Now this was the case I was talking about. This was the case related to the GI tech also. So the shawls which these models are wearing are protected by GI, and this is coming from North India, and these shawls are having particular characteristics. So like if you are having honor in that particular tribe, so it's a shawl coming from tribal area in Nagaland. So if you are coming from a like particular tribe and you have achieved something, so you will be wearing this kind of shawl with certain kind of logos. And then there are certain categorizations, so that the left one will be like for men, and the middle one will for the women. So all these things are protected by GI, by the tribe of Nagaland. And this tribe was the society, which is Chake Shang Sols, is totally governed by the women of that tribe. So
so there was a like fashion designer Ritu Berry. She thought to use these shawls in her fashion show, and she has not taken the permission from these people. So that's again an infringement. I have protected some certain thing. So these people who are sitting in Nagaland, their tribe has used their intellect and developed these shawls. Now their intellect is getting promoted to the world without their permission. So that's again an infringement. So I am just trying to highlight that we need to understand how critical IPR is. What if they have not protected it? It will be very tough for them to go against that fashion designer. But since they have a protection, they have a certificate with them. They have filed a suit against the designer for sharing this thing to the world without their prior permission. So in the end, like that was again the activity I thought of to conduct. So like if anyone wants to chip in to share that what actually you file that IPR involved in this Formula One car, I would be glad if you can share some of your thoughts on this. So this is a Formula One car which is having 100 of IPRs involved into it, because it's a like totally technological developed car. So if you want to share any of your thoughts, feel free to share. Anyone wants to? Sir, question answers will be taken at the end of the session. So I'm done with the session, ma'am. Thank you. Okay, sir. Like that's it from my side. The question so from the audience, Anuradha, that anyone who can give his ideas the car he has shown. Probably people have not understood. Okay, yeah. So, Pankaj, you please explain again so that they can think about it. ma'am, I'm getting like Dr. Amit has shared some of the ideas. He said trademark, industrial designing, patent, and trade secret. Brilliant, sir. It's a right answer. That yes, there will be trademarks, there will be industrial designs involved in that Formula One car. Patents are also involved. Trade secrets are also involved. Like how you want to like there are certain things which we don't disclose to the world. It remains with that Formula One car designer. So yes, you are right. Good. So Anuradha, now you can take up the questions. Thank you so much, sir. Thank you so much for such an insightful lecture, and everything was so explanatory, and it was wonderful listening to you. And I request audience to they can mute themselves, unmute themselves, and they can ask the questions to sir directly. Or I'm looking for the questions in the chat box. Yes, Sushma ma'am, do you want to ask something? Ashwini sir wants to ask. Yes, sir. It Ashwini sir wants to ask. Please, sir, you can ask. Yeah, see, I don't have any specific question, but I have a lot of appreciations for the Pankaj's presentation. Thank you, Pankaj, for giving this elaborate and excellent. Yes, I have unmuted Thank you, you, sir. Sushma ma'am. हाँ जी नमस्कार मैम, नमस्कार, थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी। बस मुझे इतना जानना था कि जैसे हमें यूट्यूब पर मान लो डालनी पड़ती हैं अपनी जो वीडियोस हैं, तो जैसे एक बुक को हमने ट्रांसलेट कर दिया अपनी लैंग्वेज में, तो क्या उसके लिए कॉपीराइट हमारा राइट बनता है क्या? यस मैम, यही बिल्कुल जानना बनता है है मुझे। मैम, बिल्कुल बनता है आपका कॉपीराइट। अगर आपने ट्रांसलेट किया है तो आपका कॉपीराइट बिल्कुल बनता है, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दैट आपने जो उनके फर्स्ट ऑथर है उनसे क्या परमिशन लिया है, क्योंकि आप एक नया काम कर रहे हो डेफिनेटली। नहीं, इस टाइम पे मान लो ऑथर नहीं है, बहुत पुरानी बुक्स हैं संस्कृत की, म्यूजिक में ना, माय सब्जेक्ट इज म्यूजिक एक्चुअली, तो संस्कृत की बुक्स हैं और किसी की हेल्प से मान लो वो बुक्स हम ट्रांसलेट करते हैं, ऑथर तो इस वक्त नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? मैम तो जैसे जनरली क्या होता है, कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्शन होता है ऑथर लाइफ प्लस 60 इयर्स। तो अगर ऑथर को
डेथ हुए 60 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप डेफिनेटली उस पे अपना आप बुक को पब्लिश करके आप उस पर कॉपीराइट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इवन वैसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने राइट्स को, मतलब आपने अपना इंटेलेक्ट उसमें यूज़ किया है, तो यू कैन डेफिनेटली प्रोटेक्ट योर कॉपीराइट। Okay, thanks for the information. Thank you. Thank you so much, sir. Actually, I can understand Shushma Ma'am, ma'am's question. Ashwini sir Actually, wants sir, to we add make something. lectures for our department, but they tell us to send copyright form. While some of the times we take pictures from the Google also, and some of the times we have to take picture from the book itself. And in literature, especially, we have to take the material from the book itself, which is a kind of textbook. But then they say us that you need to send copyright form to us, or you need to send the permission of the author, which is sometimes not possible in that case. I think Sushma ma'am wants to ask for that. There is one more question, Dr. Pankaj, that if we there are certain books which are now for there is an audio recording for the physically challenged people, means they have a vision problem. So now the certain books, though they are written by NCERT, but the Saksham has come up as an organization which is going for an audio recording of these books for those children. So what's the situation in that case? Ma'am, in that case, like It's copyright. This is the issue we are talking about, the copyright. yeah. So whatever the audio books or audio recordings we have done, do we have a copyright for that? So it even, for example, if it is just a narration, if it's just a narration of the book, then it is not, because it remains with the NCERT. But if you have used some of your skill, like for example, the way you are making it more easier for the kids who are unable to read it, so in that way, for your intellect, where your contribution is more, then you can, like, it's become a bit dicey area, but still the part. Ashwini sir can add more into that. May I say something? Yeah, Pankaj, I would like to take up this question of Dr. Kiran. Am I audible? Yes, sir. Okay. See, Dr. Kiran, for the same, the question that you posed. Yeah. Am I audible properly? Yes. Yes, okay. Sir. So Yes. see, the question that you asked, Yes, sir. it has an answer to it. It has an answer to it under Section 52 of the Copyright Act, where there is some exceptions to the right of the owner. Under 52 of the Copyright Act, one of the exceptions is that if any work is used, if it is translated, adapted, or if it is converted into any format for the purposes of the disabled people, or for the purposes of specifically for disabled people, I want to say it with emphasis, then it is allowed. It is a public right. Nobody can restrict you. Even if the owner's copyright is still existing, the owner cannot stop the institution to convert it into the format which will be feasible to be read or heard by that disabled person. I hope, Kiran ma'am, it answers your query. Yes. This is what I was asking, that we call it as audio books now. Yeah. So this is being done. That is allowed, ma'am. That is now allowed after yeah. After 2012 amendment, 2012 amendment in copyright law, it has been permitted. I mean, So it any means, sir, institution working for. Please. Sir, it means if any of our teacher, because we are very much focused for the innovative practices. So any of our teacher, if she goes for an audio books, that may be the translation of the existing books, she can have her copyright for that. Is it right, sir? And that is only, it will be only used for the Kiran ma'am, I would add something to it. I would add some rider to it, which is there in the law. The rider is, or you may say the additional requirement is, that the institution must be an institution working for the welfare of the disabled people.
If it is not an institution working for the disabled people, then that institution is not permitted to do this, or to convert the things into audio or any other format. It is only for those institutions where the institutions are involved specifically into the work of welfare or the education of the you may say disabled people. So far as your faculty in your college, like this Ambala City College, or other colleges across Haryana, if those institutions are doing it, then there is another clause in the Copyright Act. For the educational purposes, you can make use of any content, and to whatever quantity or extent you can go, right? But that is something only for the education purposes. Any of your faculty members can easily reproduce any author's work without any prohibition of any sort, for that matter, because our law allows the reproduction of the copyrighted work of anyone for educational purposes in the course of instruction of the university or an academic institution. Sir, is it the corollary arise Yes, from ma'am. your talk is that if our institution is either a PG college, many of my mentee institution lecturers, assistant professors are there. So if it is not, it is just a PG college or a UG college, because no vocational college, but we are entitled to enroll children with the physically challenged students. So we can enroll physically challenged students. We may not be entitled for special colleges for the special children, but we may be the journal colleges like we are. So even then, some of our people are going for are supporting with an NGO who is working not for the college students, but for some school students. But they want that audio recording of those books, which are being taught to general public or the mainstream, but they want the physically challenged, particularly from the vision. So for the blind students, so they go for the audio recording of the books. Can we have the copyright, even though we are not doing for our colleges, because our colleges students probably they are not getting, we are not having any audio recordings, but for the school children they are working. Some of our teachers are working for the Vedic mathematics, so they are recording the things and they are releasing the audio books. So is the condition of copyright, can they claim that? Yes, sir. Please, sir. No, see, on conversion of the same, they can't claim a copyright protection on those works, but they will not become liable for the copyright violation. I mean to say that this is something which comes as an exception or as an exemption to them. They can use it, right? That is permissible for them to do so. But if they start claiming their copyright, then that is not allowed, because it is someone else's work. Owner is someone else. They are just converting you may say they are just adapting the work. So that adaptation does not entitle them for any copyright. But they are allowed to do so because it is a public right now. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Dr. I would explain. Yeah, Kiran ma'am, I have one session on copyright where I will be speaking more on this, and I will be clearing the doubts of the house on this. That's very nice, sir. But Pankaj, you have made us go thank you so the much, whole world. You have sweep us the journey. Your journey was throughout the world, right from the French champagne to the Indian products, my dear. And you ended with the car, which you have put a question to all of us. So what things can be there as a patent can be there? So really very nice. We are blessed to have you, Pankaj. Thank you. And I hope the people have come out of their shells now. They have started thinking. Ashwini has he has started the ball rolling, but you have made us to think, and we have jumped into the sessions now. Because IPR itself is a very different subject, which make us to think, which have made us to think now. So thank you, Pankaj. If Anuradha, there are certain questions we can, or other we can start with Jen. Though there are no more questions. Everyone is asking your numbers, sir. Ashwini ji and Pankaj ji, we will be giving.
Ashwini and Pankaj's number are being asked, so we will ask the permission from them. They are IPR people, so let us be afraid of them, and then let us have a permission from them, and then we will give you. Surely we will share at the end of the session. Quick small query, Pankaj. Not a query, in fact, one curiosity. Yes, How sir. often do you see the academia and industry coming together with Hero MotoCorp? I feel that this trend is probably very minimal. And in your case, where Hero MotoCorp is an automobile, so I really feel that there would be a very scarce collaborative efforts, or Yes. rarely you will find any such collaboration. What is your Sir- comment on it, Pankaj? Sir, like if I talk about Hero MotoCorp, so firstly, I can't speak on that. But Okay. in general, like I being a IIT Kharagpur student, so I can say that when I was in IIT, we had a lot of collaboration with industries like Tata Steel, Tata That I Motors. know, So, but I wanted to know about the industry. so that's what I was saying, sir. Industry, like, so for example, when we want to do research on a particular domain, we know these professors are brilliant. They have done a tremendous job in particular. Like, for example, we want to develop an engine, and a professor coming from any institute has developed a lot of work in particular that engine area. So rather than doing in-house research, we will be contacting that professors and we will be sponsoring him, and we will be helping out that, sir, we will be giving you the funds. Please develop that engine for us. So that's one way to collaborate with them. Got it, Pankaj. Got it. Thank you very much. I Wonderful hope that is session. in Thank the sir. That is in the engineering colleges. These things are there. The children are prepared. They are making their own cars, and there are competitions. Yes, ma'am. And Yes. there are throughout the engineering colleges. But somewhere in our institutions, where the simple PG and UG colleges, they still need to be. They have to work on it. So that's why this is the point which NAC is Right. emphasizing. Academia, there's enhancement, skill enhancement can only be there if these two things they come, if they work hand in hand. The Ma'am, education there's a is huge and the industry. potential also in like traditional science college also, because engineering is a subset of science only. So all Yeah, those things which we do comes from physics and chemistry. correct. So the huge potential lies, but it's still like yet to like it's nobody has done that. But I hope if few of the ideas start coming from your colleges, it would be great. Yes, sir. That is what we are trying to instill among all the participants. Thank you so much, Pankaj. Thank you, ma'am. Thank you, Ashwini sir, and thank you everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am, with the permission of the chair, shall we move forward? Yes, sir. Now I feel I introduce Dr. Jain, right? Right, ma'am. Another? Right, Without- ma'am. Thank you so much, ma'am. So, dear friends, we have another resource person who will be talking on, he will be talking on application for startups in India. I hope this is his policy applications for startup of India. He is Dr. Jayant Ghosh. Dr. Ghosh is presently holding position as a research fellow at Center for Regulatory Studies, Governance and Public Policy. Basically, he is an alumnus of Rajiv Gandhi School of Intellectual Property Law, Indian Institute of Technology, Kharagpur. Dr. Ghosh specialized in intellectual property law and technology, informational privacy, data protection, and security law issues. He has testified before numerous congressional committees and continues to work frequently on the law and technology. He was awarded with 3 most prestigious fellowships like DAAD Fellowship, Max Planck Scholarship, and Indo-Canadian Shastri Institute Fellowship. Dr. Ghosh is founder and managing partner of IP think tank to facilitate and spreading awareness of intellectual property rights for the betterment of society. Dr. Ghosh is in an academic committee, member of International Trademark Association,
He is also visiting faculty of Techno India University to teach intellectual property law to the engineering students and teaching intellectual property law to the Masters of Law students in Sister Navedita University. So we welcome Dr. Jayant Ghosh for his expertise. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, Okay. sir. Yes. Okay, thank you. I was here from starting of the day, so I was listening to Pankaj and Ashwini sir and your discussion also. So I thought to share something on that, but my PPT is visible here. Yes, sir. It is very much. Okay. See that. Just a second, just technical issues here. Yes, now I can go. Yeah. So there also I want to add some of the things, but I thought to continue with the time also, and the time constant is with us. So I thought, okay, let's keep this session, and definitely I will join once Ashwini sir start his copyright aspects, if time permits to me, because there are two aspects which I want to share as two aspects with that discussion. What is commercial aspects? If you want to keep your work is copyrightable, commercial aspects should be taken care of. Number one. And number two is that, yes, we have section 52 as an exemption, but there are certain things which should be keep in mind as an educational purpose. And coming to the aspect of last issue that which ma'am told, that your college is a general college. Yes, ma'am. Yes. Here I have good presentation for them. I think so. I believe so, and hope I will create some kind of interest to them, so that they can be of an interpreter and they can be of the value addition for your college and the main stakeholder of your institution in their future. Jayant, before you start your your presentation, I just want to tell you there is a very specific question, and my colleagues who are here preparing for the NAC report to be submitted by 2022, because there is a question very specific. Do you have any startup or incubation center in your college? So your topic very much relates. If we think of starting any startup or incubation center, am I audible, Jen? Yes, you are audible. You're audible. It's a very specific question is whether whatever startup or incubation center you have in your college, and your topic very much relates to that. Any startup, if we want to stop any startup or incubation center, or under the innovative practices of any college, what policies we have to look forward for. So kindly focus on that too. Thank you so much. Jen. Sure. I'll be very specific on that, and I'll be. Thank you, sir. Sir, kindly unmute yourself. Yes, ma'am, coming to the specific query of your, yes, we have an incubation center, and I'm member of 2 universities incubation center in West Bengal. And one of the university is in national eminence, and it is for Technical Teachers Training Research Institute, which is under central government, and one is state government. So I'm working with them specifically on generation of incubation and the startup. So let's coming to the specific things, what we need to know, what we have to keep in mind. Well, I have come up with all these things in my presentation. Okay, let's come to the specific things. It's not moving. Is it moving? It's okay. Fine, sir. Please start. So in India, so in India, what we can see, we can see in last 5 years there's a huge change because of the digitalization. In this aspect, this digitalization starts and coming from the startup aspects,
from red bus to many more startups has come up, and they invested in our lifestyle in such a way, and the specific aspects of, if you say, the money concern and the startup, how it deals is, this is just a statistics which I want to show all up with you. It goes huge in every year, and it goes upward, and the funding amount and deal counts, everything is going upward. Now, coming to the aspects of present position of our GII index, this is Global Innovation Index. What it is? This is one of the best thing till date we can see as where we are now. Since 2020 it was 48, but now this year we are in 44. So we are coming with this kind of startups because of the only big aspects to protection of IP. We are raising our we are coming with our position better. This is just for highlights. Now coming to the specific part of IP direct impact which we have, which we are for the protection and the startups which need to taken care of. What is startup? What are the benefits? I will come to later on after this. But before that, what exactly they have to look in? Once the startup comes in picture, no, they have to look for what exactly they are doing, whether it is related to any specific tech innovation, or it is specific on like publication agency, or any kind of business model. Maybe it's a kind of selling of biryani or aloo paratha or chapati, anything, whatever it may be. But the thing is, what they have to take care of, they have to take care of their registration in terms of IP. If it is of any specific tech, suppose last 2 days ago, I was in a meeting as I am one of the legal consultant of a tech company, AI company, artificial intelligence company. So I'm giving a consultancy to them, and there is a product comes in. It's related to our taxing system. They want to create a comprehensive software. The client wants a comprehensive software so that they can make their taxing system, company's taxing system, very lucid way. So the protection mechanism, what they have to think of in legal way, that's their query, number one. Number two, if the technical part, the technical players, those who will do the technical part, what kind of protection they have to look for after they create that software. That's the major concern. So these are the complications we have to look for. I can see here a lot of doctorate people are here from many backgrounds. As per their respective field, they have to first categorically look for the specific aspects, that what the exact thing they have to do and on which category they have fallen. If it is of software, then it may be of patent, it may be of copyright. It depends on them. But if it is of any kind of specific brand, suppose your institution name, logo is there. So I don't know whether it is trademark protected or not. You may answer on that. But we'll go on into this later on. But if there is any brand related to your university's name comes to the market and they are providing or creating some kind of product which later on comes with a huge impact on the reputation of your college, then definitely you will not keep mum yourself, no? So in that case, you have to look for first your protection in relation to specific of publication. If you say the publication, if you are an author of a specific book, and it's a whole creation of yours, and later on it's found that
one of your friend already take note of that as you discussed with him in the canteen, and it's already in the market. So in that case, how you will take the protection? So this is all together you have to take care before starting of your startup. As starting from Pankaj's discussion, that if you are searching for, you are creating any kind of research paper, and that research paper, you are thinking that later on you will come with a patent on that specific project model, then in that case, you have to look for a patent search first, whether that kind of product already available in the market or not. If it is already available, it's a suggestion that you should not go with the same. You should make it modification with that exemplary substantive number of modification, then only it will sustain for patent. That's where we are lacking. Every educational institution, and these days MIT is one of the bigger player who is filing patent in private sector. Then the same university, what they are doing, they are filing patent and patent in most of the time with this little bit of changes in same product, but the quality of patent here, as a number is increasing, but the quality of patent which will be sustained or not, they are not looking for it, because it may be the scene that out of 100, 1 or 2 will sustain. So it's another dangerous zone for them. It's a without the knowledge of specific product and the specific innovation, then they are going for just increasing their number in the market. And as you know, that highest patent holder institution, they are getting lot of benefits from the government. I'll come to that, all the schemes later on in coming session. But the issue where we should take care of that specific part of the protection part. If your product, if your startup is related to any kind of IP, I would say that you should first register your IP, because there are a lot of issues later on comes in. Okay, now coming to what is startup. It should be of minimum 5 years of age and not exceeding 25 crore rupees in any financial preceding year. This is what a kind of comprehensive meaning, so to say, not definition, meaning comes to our domain, that exactly what are the agencies we can think of it as a startup. I'll come to that flow chart, how a startup can be come in picture. And now coming to that benefit, if you say specific benefit of a startup to promote awareness, adoption, IPR startups, it's an exclusive design and kind of emerging issues where you can maximize your commercial benefit out of it. And with that the changes of changes of the notion on the digitalization, that affordability and convenient. If your startup is coming up with this kind of stuff, like for example, urban clap, now it's become an urban company. So this kind of startup, this is a form of startup, this now is going to huge in the market. So this kind of benefits which we have to look for, and to avail that benefits, what are the things we need to do? First, certification. We need to get the certification first, and connect and enlist enlist a startup is a facilitator in the facilitation center. You have to enlist it. It's available in the MSME website, MSME Ministry of Micro, Small and Scale Industry. That in that you have to register your startup. Now, who is the facilitator? Facilitator in terms of government, there are persons who facilitate in your IP protection.
that controller of patent, trademark, design, who is the one permitted agency who can assist for startup protecting their intellectual property right. But this is altogether what I am telling. It's related to purely government authentication. But in spite of that, also you can go with the own private counselors like us and consultants for the protection of because this system is prepared by government, but it was also run by the private players, also private consultants. How? Because if you get the same service of government and the private players, you can judge yourself your work situation. And with that, provide general advice to the startups is a pro bono basis. It's because the government is providing this startups as these startups comes from the rural or in urban or in semi-urban area, semi-rural area. So in that case, if you as don't know of the domain altogether, in that case, once you are registered in the facilitation center, then in that case they will automatically help you without any kind of remuneration. But if you go with a specific consultant, then definitely they will charge you. So here is the difference. And what they are provide information with regard to protection and promotion of IPR of startup or in this country and other countries also, and provide assistance of filing and disposition of IP application with regard to patent, trademark, and design, whatever it may be. It's related to that specific startup, and the specification startup and ancillary functions, if it is required any kind of certification, if it is of related food item, then FSI registration and other all the other necessary things, if whatever it is related to your startup. And the same way, preparing and filing responses and examination of report notices, all these things are being done through a proper channel of a government agency, which is providing in. And does the government can claim any right? No, absolutely not. Here, government became a facilitator to boost the economy of a country. They are providing this kind of services, and it's purely a scheme. In the year 2016, this scheme comes in, and where you will get this facilitator. There is a website, ipindia.nic.in, where you can log in and get the facilitator who can facilitate you, and you can get this service free of cost. So as I am telling, that's a general college. So once you are come up with any kind of business model, you can directly get their services free of cost once you connect with this website. And through this website, you will be directly entered with this to a zone where the IP specialists are sitting there to help you out, whether your startup is required any kind of IP facility or not. So the facilitation, it's all together here, it's pro bono basis. So here we are as a government institutions also I along with the part of my IPR chair is one of the IPR chair among 12 IPR chair, DPIIT IPR chair. So we are providing free services, free IP services to the startups. How to register and where to file the claim and all the necessary requirements as per the startup is concerned. And what you need to take care of, as we are in a zone of shifting our creativity to the level of intangible mood. So where these intangible items, the trademark, patent, copyright, industrial design, trade secret, all these things need to be protected through legal mechanism. So here we need to take care of all these items if it is come up with a startup venture. And
what are the strategies? First strategy, to make intellectual property a priority. Once your startup can explore their IP through maybe it's a patent or trademark related, then only you can generate your wealth later on in generation to generation. As you know, the IP system provides comes with a duration, that patent 20 years, trademark 10 years plus 5 years renewal. Then all these things, it will not be a case that once you start the business, after all you face the loss and you shut down your business, and then you are nowhere. In case of IP, once you registered an IP through of your startup, then it will go on till the date your expiry, or as per the legal requirement. So in that case, the priority should be to make the protection of IP. And how that priority you will get in? Through the registration process. Now, in every registration, there is separate requirement and separate fees also. Recently, there is a suggestion to the to the ministry that the patent filing cost should be reduced, and it's placed to the parliament. I don't know whether it will be gone through or not, but as patent filing cost is much more higher, so the interest of filing is very less, and who can afford it, they are only going there. But in spite of that, this is related to costing part. In spite of that, there is another aspect. For filing a patent, MSME has come up with a very interesting scheme, which is called IP Facilitation Center. Government on their own, they are providing funding to set up an IP Facilitation Center in every state. In India, till date, it's a 24 in number. It's IP Facilitation Center. I believe in every state there must be one, but some of the states, if they have not requested, like Tripura, I know, because I'm very close with Tripura, there is no IP Facilitation Center. As the government not shown interest to the central government, then in that case, there will be loser for IP Facilitation Center. Once the IP Facilitation Center is there in your state, you can directly go to them, and they will directly help you to file with funding, to file a patent with funding. They have the fund, and this funding is for startup. And first initial stage, I can say initial stage for setting up that IP Facilitation Center, it's 5.5 crore government is giving. And that what is the qualification to be an IP Facilitation Center? It may be one of the NGO, it may be one of the institute, like your institute, government, obviously government institute. And these are the some criteria to be to be eligible as a IP Facilitation Center. And if once the center comes to your area, then you can directly go to them to get the benefit of IP Facilitation Center as a first startup. It may be of your startup of 10,000 rupees starting. So you have, I don't think so you have the much more ability to make it more, to file a patent by giving 50,000. So in that case, that IP Facilitation Center is there to help you out. So that registration part is most important. And with that, that IP Facilitation Center is there to help you out. And the due diligence of IP right, yes, it's if you file that IP with the due diligence and the specific area, then in that case you will be in greater good zone. Then in that process you will be in the no risk zone. So, and the next part is the implementation clear and effective policies and strategies for IP protection.
your startup should take care of your that startup's IPs. In that case, they should have some kind of terms and condition, as like as other companies, big companies, they have their own IP policies, privacy policies, where your IP should not be exploited. The most important thing, your startup IP policy should be there, and various management related aspects, like, for example, if today me and with my three of friends start with an startup, and we created some of the IPs, and later on one of my friend left us from the startup and he went some other areas and he start with another startup. But our the first startup with three of my friends, we have registered all the patent and trademark, but what he knows the process, how we have created all this stuff, and later on he took that know-how, that confidential aspects of this startup to that startup, and he started another one. And in that case, what would be your take? This should be mentioned in your IP policy. That policy should be of that kind of that kind that you cannot be exploited in future further. And agreement related to IP, yeah, same. This this agreement, let me tell you one of the agreement. This is NDA, non-disclosure agreement. So if anybody worked in your IP, in your startup also, there should be a NDA. You should sign as an startup owner, you should sign them with that non-disclosure agreement, that you cannot share any kind of information which is confidential in nature related to this startup. So these are the specific areas which you need to take care of at the time of creation of your startup. Yes, 2016 scheme, our PM says this kind, this quote. I don't want to, it's there. And the specific thing, the action plan on that 2016 plan is simplification and hand-holding, funding support and incentivized, industry and academic partnership and incubation. Yes, coming to this third point, industry and academic partnership and incubation. Parliament last 2 weeks ago, comes up with 161 report of the Ministry of Commerce, and on that ministry, it's the 14.12 number para. It specifically mentioned industry and academia relationship. It's an action plan given to the specific industry and academy, that both of you as a player come jointly and start your action for the society benefit. There are some specific points mentioned on that, and in fact, I also submitted one of the action plan to them, to the ministry, with the expectation that definitely there are some industry will comes with me in my institute, and we'll have a good collaboration. In fact, I applied to NASCOM also for their specific legal help, and so that we can come with a specific area of for giving the benefit to my students and startups related to me. Now, coming to a specific steps, how a startups to be set up. This is one of the comprehensive roadmap for a startup, starting from C. There must be a private limited company LLP partnership form. First, you have to frame this. For that, legal requirement is different thing. This is you have to take care of later on. This is absolutely your wish, your take, because privately limited company, for that you have to pay 40,000 in relation to Kolkata, I can say, in the for registration. LLP, the exact amount I don't know. Partnership form, there is nothing. You just need to have a deed.
through notary. And age should not be more than 5 years. Your startup should not be more than 5 years. If yes, then turnover should not be exceed 25 crores. If that also yes, then should develop a innovative product which should add to the value to the customer and should be commercial. Value to the customer and should be commercial. If that also yes, then get approved from DIPP that your company is an innovative company, that your startup is an innovative startup. From there, you can go any of the scheme. If you meet condition A, B, C, D, E, and any one of F series, then you are a startup. This is what you should follow. This is a comprehensive straightway plan how you will be registered as a startup, and in that A, B, C, D, E, and F, F1, F2, F3, F4. All these things should be meet, all these conditions. Then you can register yourself as a startup. Got my point? Now, coming to the specific zone of IP. Everywhere we are discussing IP. So it's just a picture. In one picture, I tried to connect all the IP with the patent, trademark, ID, GI, patent, trademark, and industrial design, all these things. So I don't think so it's required any kind of explanation. Now, coming to the most important thing is schemes. What are the schemes presently we have? These are the heads. And on that head, government is providing 4, 5, 6, 7 number of schemes. Now, you have to look for which scheme you are fit in. Your startup is what kind of startup? It's related to khadi or village or coir industry, or it is related to technology upgradation or quality certification. And if it is related to entrepreneurship or skill development program, as madam is telling that your institution, you can provide skill development aspects. So here you have a lot of scheme, and these all the schemes is taken from the MSME website. If you want to do any kind of survey, studies or policy research, yes, it is here. NAC will look for this, if you are getting this kind of funding from the agency or not. If it is there, then definitely they will take care of your institution in greater way. These are the some areas: scheme information, educational and commercial communication. In every aspects of here, each and every portion has their own different schemes. Now, what are the highlights of a startup? First one, self-certification. Your startup should have certified, should be certified. Startup India Hub, easy registration, patent protection. What if it is related to some kind of patent? No capital gain tax. The most important things. Tax exemption. Your startup in first 3 years, they will get free tax exemption, subject to some condition. There are some conditions. Building as an entrepreneur, setting up incubator, research park, and legal support. So these are the specific highlight, most important things. So, and along with that, the IP application is most important. If it is there, then only you can be connected with a lot of funding agencies, because a startup as a educationist, I don't have that much of funding so that I can start with kind of business. No, for that I have to look for funding. And the most important message which I feel for a startup, it should look for protection through IP registration. This is one of the message I want to give to all the startup.
because the IP protection is one of the most important factor for any startup. And related to funding part, there are schemes, there are policies. You can take up funding from private player also. Just a couple of months ago, I was coming up with a kind of funding agency where they are initial stage, they are providing funding to the all new startups. If any startup plan, they thought they call for proposal for the startup plan. Out of that, if they think that this is a one kind of potential startup which can be commercially viable in near future, they are providing fund from them with no EMI, with no interest. Sorry. So these are players are available in the market, but the most important thing, you have to take care of IP registration. I can understand that initial stage you may be not in a position to protect your IP in such a way, in a very robust way, but you have to look for it for later stage, or else your startup may be end up with some kind of legal nuisance. With that, thank you all. I believe there will be a lot of questions, and I open the floor of questions. Anything? Any? Yes. सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी मैम। जैसे कि हम मैम ने भी बात कर रहे थे कि यूजी कॉलेज है और यूजी कॉलेजेस में सर हमारे पास ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो सर इसमें हम स्टार्टअप की बात कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं मैम, हर बिजनेस में तो मैनेजमेंट आता है। यस सर। हाँ, अब बात रही कि फिजिक्स है, कॉमर्स है, फिजिक्स है या केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री का कुछ भी इक्वेशन आप रेडी करते हैं उस तरीके का जो कि एट द एंड लैंड अप विद ए लाइफ सेविंग ड्रग, ठीक है? तो उस प्रोसेस में आप क्यों नहीं स्टार्टअप पे जा सकते हैं? मैम, थिंकिंग इज विथ यू, इनोवेशन इज अवेलेबल, आपको सिर्फ उस तरीके से इसको मोल्ड करना है, आपका थिंकिंग पर्सपेक्टिव को उस तरीके से चेंज करना है कि इट कैन बी लैंड अप विद ए स्टार्टअप, it can be lend up or it can take to the market where you can get the maximum benefit through commercial. Obviously commercial aspect should be there. सर जैसे कॉमर्स में अगर हम सोचे तो कॉमर्स में किस तरह के स्टार्टअप की बात कर सकते हैं? मैम कॉमर्स में मुझे जो इतना पता है, केस स्टडी एक चीज होता है। यस सर। जिसका डेटाबेस भी बनता है। राइट सर। जो डेटाबेस, केस स्टडी का डेटाबेस जो है वो ह्यूज अमाउंट में सब्सक्राइब होता है हर यूनिवर्सिटीज में, एंड नॉट ओनली इन यूनिवर्सिटीज, इन द कंपनीज आल्सो। अब आपको उस तरीके का सोचने का तरीका लाना पड़ेगा स्टूडेंट्स के अंदर कि वो उस तरीके से सोचे कि उस जो काम कर रहे हैं, एवरी वर्क इज इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ यू विल इम्प्लीमेंट इट और अप्लाई इट, that depends on you. आपको मार्केट ओरिएंटेशन के हिसाब से सोचना पड़ेगा, अभी मार्केट में किस चीज का डिमांड है, देन ओनली ये स्टार्टअप में ग्रो इन हायर वे। और रही बात फंडिंग की, वो तो डिफरेंट स्कीम आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से वो तो अवेलेबल है ही, आपको सिर्फ उसका एलिजिबिलिटी मैच करवाना है और अप्लाई करना है ना मैम? Yes, sir. Thank you, sir. Any other question? Yes. I request to participants if they have any question, please. अभी एक चीज, एक स्टोरी शेयर करता हूँ मैं जिस कॉलेज का इंक्यूबेशन सेंटर का एक्सपर्ट हूँ, एज एन एक्सटर्नल एक्सपर्ट। सो वहाँ से कुछ प्रपोजल्स ऐसे आ रहे हैं जिसको मार्केट के हिसाब से हमें वेरीफाई करना है कि व्हाट काइंड ऑफ आईपी पॉलिसीज दे हैव टू टेक केयर एंड व्हाट आर द नेक्स्ट प्रोबेबल प्रॉब्लम्स दे कैन फेस।
सो उस तरीके का अगर प्रपोजल रेडी है, उस तरीके का चीज अगर आ रहे हैं आप सामने, then you are the person to judge it. You have to make it in such a way so that it can be more fruitful for near future. That we have to look for. सर जैसे फैशन डिजाइनिंग में है, बीएससी टेक्सटाइल और फैशन डिजाइनिंग में, तो क्या हम बच्चों को, अपने बच्चों को वहां से स्टार्टअप में कुछ करवा सकते हैं? अरे मैम, फैशन डिजाइनिंग is one of the best area these days, and Yes, sir. IP has huge implications. Best, one of the best. In fact, where I'm sitting now, just next to door is NIFT, National Institute of Fashion Technology. They are one of my researcher is working on fashion law specifically. So they are looking for the protection of the small craftsmen, because they are not the player who can take up their design to the market. It's not possible for them. But as a community, if it is there as a community, कुछ ऐसे डिजाइनिंग्स है जो कम्युनिटी बेस पे रेडी होते हैं, राइट लेटर ऑन। हाँ, सो उस चीज को हम अगर कम्युनिटी बेसिस के आधार पे मार्केट में ले जाए, देन वी कैन गिव मोर एम्फसाइज टू देम। Any other question from participants? Sir, the chat box is full of compliments, very informative session, very enlightening session. So if there will be any doubt, then sir, we will, sir, ma'am Rashmi wants to ask something. Yes, Yes. Rashmi ma'am, please. Yes, Rashmi ma'am. Do you want to ask? Here I shared my mail ID. If anybody has anything later on comes to your mind in these aspects, you can directly contact with me. I think, sir, by mistake, the hand is raised. The session is very, very informative. The chat box is full of compliments. And of course, we will, people are writing very informative, influencing. Rashmi ma'am is telling. Sir, just give me 1 minute. She wants to say something. Sir, just give me 1 minute. Yeah, sure. There is some technical issue. Just give me. हेलो। यस मैम। हाँ सर, नमस्कार। मैं मास कम्युनिकेशन की टीचर हूँ, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मीडिया में स्टूडेंट के लिए किस तरीके से हम इनोवेटिव जो है पॉलिसी या इनोवेशन प्रोग्राम डेवलप करें, जिससे कि वो सीखें और दूसरों को भी सिखाने का कुछ प्रयास करें। मैम, आपके डोमेन के हिसाब से जो मैं कह सकता हूँ, वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक चीज है। जी है, जो स्किल डेवलप। हाँ, वो एक चीज है। और एक चीज जो है, आपका जो स्पेसिफिक एक्सपर्टीज एरिया है, उसको हम किस आईपी के साथ जोड़ सकते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा।
स्पेसिफिक एक्सपर्टीज अब मास कम्युनिकेशंस के हिसाब स्पेसिफिक से एरिया सर जैसे राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, डिजाइनिंग है, इस तरीके से जो है उनके स्पेसिफिक एरिया है, और एंकरिंग है, ये भी स्पेसिफिक एरिया है। तो इसमें हम किस तरीके से डिजाइन करें प्रोग्राम को जो आपके हिसाब से जी बोलिए, जो ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों को सिखाया जा सके अपने डिपार्टमेंट के तरफ से या बच्चों को भी, स्टूडेंट्स। मैम कंटेंट राइटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एरिया दीज डेज, क्योंकि कंटेंट राइटिंग जो है हर मार्केट में जरूरत है अभी। कंटेंट राइटिंग सही से कंटेंट राइटर आजकल मिलते ही नहीं, सच में, मतलब इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन आई एम आल्सो लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ कंटेंट राइटर, because I am also holding a position that IP think tank, which I am founder of that. So at the time of writing of that specific content in the website, I'm unable to get. So this zone is one of the best zone these days. It's highly required. सर एरिया कौन कौन से हो सकते हैं जिससे कि उनको बताया जा सके कि आप इस एरिया में कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं? Ma'am, presently it's that content writing is a kind of art. So उनको सही तरीके से अगर वेबसाइट कंटेंट राइटिंग के हिसाब से उस चीज को डेवलप करने का आइडिया दिया जाए, आई थिंक सो इट विल बी मोर हेल्पफुल। ये एक एरिया है जो बहुत ही कम लोगों को पता है, ये एक चीज है। और एक चीज है एकेडमिक कंटेंट राइटिंग। एकेडमिक कंटेंट राइटिंग इट्स डिपेंड्स ऑन टोटली योर, because if you have good English skill, then academic content writing may be of that status, because without good English skill you cannot that। if you are talking about English और हिंदी के लिए अलग है, तो उसका सब्जेक्ट नॉलेज जो उस तरीके का डेवलप होना चाहिए, then only they can go for this kind of content। but website content writing is something else। वेबसाइट कंटेंट राइटिंग वो थीम के हिसाब से होता है। सो आप अगर थीम को अच्छे से मॉडिफाई कर सके, मॉडिफाई करके लिख सके, देन यू कैन गो फॉर इट, है ना। बाइलिंगुअल होना बहुत जरूरी है सर कंटेंट राइटिंग के लिए। यस, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। Any other questions or anything? Anything, anybody, or else we can sign off. And I really express my heartiest thanks to the organizer, and I wish their NAC requirement and UGC requirement should be fulfilled. So to network issue today, there is a network issue. So that's why the system is going off and on again and again. It's my proud privilege to thank you. I deem it great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. First of all, I should thank my heartfelt thanks to Dr. Ashwini Sivalji, who has given an immense support in conducting the seminar. Then I am thankful to Dr. Pankaj Tyagiji on the topic. He has given a very informative lecture. He told us about patents and how we can go for patent. How can I forget you, sir? You have told us how to start a startup, Dr. Pankaj Tyagiji. Now you have given us an idea that we can start a startup in commerce as well as arts, whether it is an area of content writing or whether it is an area of having case studies. We will surely go for this. And my sincere thanks to our principal, assessment and accreditation ambassador, without whose support we cannot conduct this seminar. Their time-to-time guidance and motivation makes us to do better in this
education area. And my heartful thanks to our IQC team who have worked hard to ensure that this occasion should be successful. Thank you. Thank you very much. The feedback Thank you. link will be shared soon. Thank you, sir. Thank you very much. The meeting is open for 10 minutes. So please, you can fill your feedback form.
अच्छा हम्म हम्म आई है
उड़े कर दे बाहर, नहीं बाहर कर दे। बुरा करते लगवाया भाई? पीजीआई में चलेगा फिरता है। अच्छा, कौन सी लगवा के आज? बुद्धि ठीक नहीं उठाऊं। 2 सेंटर पे शील्ड लगा। क्या बोले फिर मैं लगा दी, देखा क्या मैं? आधार कार्ड दे। एकदम चल रहे ठीक, चल रहे था इसी तो। सब लगाओ और आड़े सीटा बैठा दे दो। पुराना बुलाओ। ये मान के बैठे बड़ा अच्छा है।
Madam, can you please send the feedback link once again? It got disconnected. Can you please send the feedback link, ma'am?
Ah,
Oh, yes, sure. Please.
Udah guru? Ya. Oh, iya lihat siapa itu?
Good afternoon, dear participants. We are going to start shortly. I hope Ma'am Anjali has joined. Hello, yes, I'm already here. Thank you. Welcome, ma'am. Thank you so much. Very good afternoon. Yeah. Good afternoon, everyone present here. Today is third day of FDP, Institutional Values, Vision and Leadership. And it gives me immense pleasure to welcome eminent personalities like you, ma'am. I welcome our distinguished speaker of the day, Dr. Anjali Bhatnagar Jain, Dr. Kiran Angra, Principal cum Assessment and Accreditation Ambassador, Pramarsh, various principals of Menti colleges, my friends and colleagues of Menti colleges, my IQAC team and IQAC coordinator, Dr. Anuradha, and other dignitaries present here. Dear friends, we have joined together under Pramarsh scheme of UGC to reflect the most important feature of NAC, that is human values and ethics under criteria 7. I feel overjoyed and my gratitude goes to Dr. Angra for giving all of us this wonderful opportunity to organize such an important FDP under the Pramarsh scheme of UGC. Thus, I avail this opportunity to invite my praiseworthy and torchbearer principal, Dr. Angra, to introduce and welcome resource person of the day, Dr. Anjali Bhatnagar. Ma'am Principal, over to you, ma'am. Okay, thank you, Nishu Bansal, our NAC coordinator. I feel delighted to welcome all of you. And dear friends, today we have Dr. Anjali Bhatnagar with us, who will be dealing human values and ethics today. Dear friends, for such a topic, we are fortunate that we have such a person. So Dr. Anjali Bhatnagar has been an associate professor in the Department of Commerce, Shri Aurobindo College, Delhi University for last 25 years. She has been associated with the institutes like Chartered Financial Analyst, Business School, All India Management Association, Indian Institute of Planning and Management, and Delhi School of Economics. Beyond the teaching or such an association, why I said that she is the right person for this topic. She is a keen follower of Ayurvedic healing and medication. In addition, after earning the Yoga Shiromani credential from Shivananda Yoga Vedanta Center, Dr. Anjali has been continuing her journey by being a professional yoga therapist for the last 11 years. So you can understand she's a blend of human values, no doubt a yoga person who herself involves herself, the upliftment of the spiritualism which is there in all of us. And of course, learned faculty from the field of commerce. So here I present to you, ma'am, the whole dais in the forum. This all the point in the 7th criteria of. So we wish you to be here with us and pondering your thoughts.
you will be disseminating your thoughts on this topic, human values and ethics. So thank you very much for your presence. Although the friends, this time is for the sleeping, probably the good speaker keep you alive, awaken, and she is going to do that for us. So good afternoon, madam. Let's start. Thank you so much, ma'am, for this gracious opportunity to start with, and those very, very kind words. उनको सुन के तो मुझे ही बड़ा uplifted लग रहा है अपने So I am obliged to the college also, the M.D.S.D College Ambala and the other mentee colleges, and I welcome you all, Madam Dr. Jagjit Kaur, Kiran Angra, the Principal, Dr. Kiran Angra, yeah, the IQAC Coordinator, Dr. Anuradha, Miss Nishu Bansal, the NA NAC Coordinator, and the other principals of other colleges who are here, and the other participants. So great to have you here. Ma'am ने बोला कि जगा के रखूंगी, तो वो मेरा वायदा है, क्योंकि मैं बहुत सारी कहानियां आपके सामने रखने वाली हूँ. उम्मीद करूंगी कि ये kind of शायद एक dry topic और kind of outdated, but इसकी कभी relevance खत्म नहीं होती है, surprisingly. जितना outdated लगता है इसकी relevance thanks to COVID उतनी बढ़ के आ जाती है. You know, things and events keep happening जो कि इसको और alive करते रहते हैं. Moral values and ethics, it is such a comprehensive topic कि मैं सच्ची में जब थोड़ी तैयारी कर रही थी तो मैं ये सोच रही थी मैं कहाँ से शुरू करूँ. It is apart, it is like समुद्र, like you can't, कहाँ से घेरूं, किधर से पकड़ूं, कहाँ से शुरू करूं. And you know, assigning the weightage to the individual topics was such a big challenge for me. It was tough, believe me. And because this is such an area that touches every single aspect of your being, your social, economic, financial, spiritual, workplace, your environment, घर गृहस्थी, कौन सा ऐसा एरिया है जो ethics और moral values से नहीं affect होता, तो इसकी relevance इतनी ज़्यादा है. So I will start sharing my screen. I'll start with that. I have a PPT to share with you. Ma'am, screen share हुआ क्या? बहुत बढ़िया. Okay. So I will just take a minute. I was having my PPT right here ready. It's somewhere escaped. So I am so sorry for that. But just give me one moment, all of you, and I will be here. Hopefully things work. And there they are. Okay, so I believe you can now see and hear me pretty okay. And there we are. So this is the topic, most of you are aware of it. I'll quickly move on to the coverage of the topic today here. Before I start, I would like to just mention what Albert Einstein once remarked. He said that I speak to everyone in the same way, be it the janitor or the garbage man, or be it the professor, or maybe the president of a university. So unke liye, and I think, is it okay to be bilingual, like Hindi and English? That's what I was told. Please let me know, and if you want any particular, if there's a preference for any particular language. Madam Dr. Anjali, we will be very much comfortable in Hindi. You can have lectures in Hindi, ma'am. जरूर जरूर, तो ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश अपनी इंग्लिश में somewhere हिंदी and English mix कर लेना मैम. हाँ जी, मैं इंग्लिश आप हमारे तक ज्यादा जल्दी पहुंच पाएंगी और हमें जगा के रखेंगी. जरूर जरूर मैम, जरूर. और इवन हमारे महात्मा गांधी जी ने भी यही बोला कि एक इंसान का, उसका व्यक्तित्व, उसका कैरेक्टर, इससे पता चलता है कि जो लोग उसके नीचे हैं, you know, औहदे में, वो उनके साथ कैसे पेश आता है. So how we actually interact, and हमारा कैरेक्टर वहां पता चलता है. अपने से ऊंचों के साथ तो हर कोई ही अच्छे से और दब के और जैसे कि कहते हैं निमाणा होके बात करता है, लेकिन और बराबरों के साथ तो खैर अपना लेना देना और प्यार होता है, पर अपने से नीचों के साथ हम कैसे पेश आ सकते हैं,
और आते हैं, वो हमारे कैरेक्टर की सबसे बड़ी पहचान है। और इसी नोट के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ, जो कि मैं टॉपिक्स कवर करूंगी। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स क्या होते हैं, बिना आप लोगों को बोर किए। थोड़ी सी फिलोसफिकल थियोरीज हैं, थोड़ी सी जेन टीचिंग्स हैं, क्योंकि जेन और बुद्धिज्म भी बहुत ज्यादा वैल्यू ओरिएंटेड हैं कल्चर्स। भगवत गीता, उसका क्या उपदेश है। योगिक कल्चर में भी हमारे व्यवहार, हमारा आहार, हमारा जीवन शैली, हाउ वी बिहेव विद पीपल, यम, नियम, बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रिकॉशंस हमारे को दी गई हैं कि कैसे अपने जीवन को उत्तम बनाया जा सके, तो उसको भी कवर करूंगी। थोड़ी बहुत वर्ल्ड वाइड रिसर्चेस हैं और फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय फेमस पर्सनालिटीज। सो फ्रॉम हियर वी पिक ऑन एंड ह्यूमन वैल्यूज। तो आप लोग अगर इंटरेक्ट करना चाहेंगे तो आई वुड लव कि अगर आप अनम्यूट कर सकें अपने आप को। पता नहीं ये प्रिविलेज सबको है कि नहीं, तो अगर मैम अगर आप करना चाहें, कोई बीच में क्वेश्चन पूछना चाहे तो मोर देन वेलकम, और अगर कुछ शेयर करना चाहें तो भी यूर वेलकम। सो ह्यूमन वैल्यूज आर बेसिकली स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स जो ये बताते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो हमारी लाइफ के अंदर वो एक तुला जो होती है ना, जो ये बताती है कि वेदर वी आर इन द राइट प्लेस और नॉट, और जो कि गाइड करती है हमारे एक्शंस को। सो दिस इज लाइक अ बिलीफ सिस्टम कि मैं क्या बिलीव करती हूँ और उसके हिसाब से मैं अपने आप को कैसे एक्ट कराऊंगी। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ह्यूमन वैल्यूज। और जो एथिक्स की बात करते हैं, तो एथिक्स इज हाउ वी कंडक्ट आवरसेल्व्स। तो वैल्यूज को दिमाग में रखते हुए जब हम अपने आप को एक्ट करते हैं, वहां पर हमारे एथिक्स काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक रिस्पेक्ट. Respect is a very beautiful value. We should respect elders, rather we should respect all people. लेकिन रिस्पेक्ट का कोनोटेशन क्या हुआ, उसका जो एथिक है, जो हमारी लाइफ के अंदर जो उतर के आता है, जो हम क्रियाएं करते हैं, वो क्या हुआ? वो ये कि जब हम अपने से बड़ों को मिलें तो हम आदर से उनका सत्कार करें, हम उनको विश करें। हम अगर जैसे वेबिनार है तो भी, जैसे मैं अपनी क्लासेस भी अभी हम सब ऑनलाइन ले रहे हैं, तो मैं ऑनलाइन होती हूँ, मेरे स्टूडेंट सारे ऑफलाइन होते हैं, मैं कहती हूँ भैया ऐसे तो नहीं चलेगा, अगर मेरा स्क्रीन खुला है तो आप लोग को भी खोलना पड़ेगा। तो ये उसकी एक प्रैक्टिकलिटी आ गई कि उसको हम अपने अनुभव में कैसे लाते हैं। सो वहां जब हम अपने प्रोफेशनल कंडक्ट के बारे में बात करते हैं तो एथिक्स आ जाते हैं। एथिक्स ज्यादातर जो कुछ प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं उनके होते हैं, बट जो वैल्यू सिस्टम्स होता है वो इंडिविजुअल्स का होता है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि हमारी कौन कौन सी वैल्यूज हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है, वैल्यूज में और एथिक्स में। आप ये देख रहे हैं अनएथिकल बिहेवियर का ये एक स्लाइड है जो आपको दिखा रही हूं मैं, कि कैसे हम दूसरे को रौंद के और उसके ऊपर चढ़ के और चल के अपना रास्ता बना लेते हैं। और जहां तक कि सच्चाई, ईमानदारी और झूठ की बात है, तो खलील गिब्रान एक बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी ट्रुथ एंड लाई के ऊपर। तो उन्होंने बोला उस स्टोरी के अंदर कि एक बार सच और झूठ दोनों ओशन में नहाने गए। सो दोनों ने अपने कपड़े उतारे और पानी में घुस गए और फिर नहाए। जब बाहर निकले तो दोनों ने एक दूसरे के कपड़े अदल बदल कर लिए। तो झूठ ने सच के कपड़े पहन लिए और सच ने झूठ के कपड़े पहन लिए। और कहते हैं कि उस दिन के बाद ये जानना और कहना कितना मुश्किल हो गया है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो ये छोटी सी स्टोरी बताती है कि आज के युग में व्हाट वी सी, व्हाट वी हियर, सब चीजें इतनी फिल्टर्ड होती हैं, इट इज सो हार्ड टू एक्चुअली असेस कि क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है। तो बहुत विजिलेंट होने की जरूरत है। एंड अगर थोड़ी सी वैल्यूज को लिस्ट करें तो बहुत सारी, मैं तो वैसे चाहूंगी कि बहुत सारी टीचर्स हमारे साथ शेयर करें कि उनको कौन कौन सी वैल्यूज समझ में आती है। पर अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और चैट बॉक्स में देख रही हूँ वैसे, तो अगर कोई बता पाए, और नहीं तो वैसे तो मैंने ऊपर स्क्रीन पे शो कर ही रही हूँ। तो देयर आर कपल ऑफ moral values that we have: love, respect, kindness, purpose, sacrifice, innovation, forgiveness, bada dil, learning, responsibility. There's a whole lot of perseverance, humility, the attitude, the hope. All these are the various moral values which are very valuable to us. क्योंकि वो valuable हैं, इसीलिए उनकी महत्ता है।
और मैं अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगी। जब मैं छोटी थी, आई वाज यंगर इन स्कूल एंड स्टफ, तो ये ऐसे बोलते थे जैसे ना इंडिया से बाहर के उनका ना बाहर लोगों का कल्चर नहीं है, इंडिया का कल्चर है, कल्चर है। मैं सोचती थी क्या कल्चर है। मैं ताजमहल भी छोटी बच्ची होके गई देखने, तो मुझे वो सुंदर नहीं लगा। फिर जब मैं बड़ी होकर गई तो मुझे वही ताजमहल बहुत सुंदर लगा, क्योंकि मुझे समझ में आया कि वो किस चीज का प्रतीक है। जब तक वो नहीं बात समझ में आई थी तब तक मैं उसको वैल्यू भी नहीं कर पाई थी। उसी प्रकार से ये सारी चीजें हैं कि हम इनकी वैल्यू तभी कर पाते हैं जब ये हमारे लाइफ को टच करती हैं और हम इनको सच में रियलाइज कर पाते हैं। मैं छोटा ये बार को थोड़ा मूव करना चाह रही हूँ। ओके, राइट। एंड तो नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी ने तो नॉन वायलेंस के ऊपर कितना, उन्होंने नॉन वायलेंस और अहिंसा की बुनियाद पर, सिर्फ एक मॉरल वैल्यू की बुनियाद पर पूरे देश को आजाद करा लिया। तो मतलब कहते हैं ना, अगर ये एक सिरा भी पकड़ लेंगे, अगर एक वैल्यू भी पकड़ लेंगे, तो बाकी तो अपने आप दे विल लाइक ट्रूप इन, यू नो, दे विल वॉक इनटू आवर लाइव्स। एंड एक बहुत ब्यूटीफुल चीज थी इंटेग्रिटी, जिसके लिए तो मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी कि कहते हैं इंटेग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस। कि अगर हम बहुत ईमानदार हैं, इंटेग्रिटी बहुत है, लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो हम वीक हैं, क्योंकि हम अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ कहने को नहीं होगा। और नॉलेज विदाउट इंटेग्रिटी इज डेंजरस। दूसरी तरफ जो कि आज की समस्या है मेरे ख्याल में, नॉलेज बहुत लोगों के पास है, बहुत पढ़ लिख रहे हैं, डिग्रीज, अवेयरनेस, थैंक्स टू गूगल, बट इंटेग्रिटी डिमिनिश होती जा रही है, which is a danger sign. It's dangerous, it's dreadful. तो हमारे को इन दोनों का बैलेंस, समन्वय करना बहुत जरूरी है। एक तरफ इंटेग्रिटी और दूसरी तरफ नॉलेज। ऐसे ही ट्रस्ट है, होल लॉट ऑफ मॉरल वैल्यूज। इनकी महत्ता कभी जीवन में कम नहीं होगी। जब तक इंसानियत है तब तक ये जिंदा रहेंगे, और हमें समय समय पर इनकी वैल्यू ज्यादा अनुभव होती रहती है। वो नेचर का काम है। नेचर जब खटखटाता है तो हमें से बार बार इंसान जागता है, उठता है और अवेयर होता चला जाता है। वैल्यू एजुकेशन को अगर हम थियोरेटिकली पढ़ें तो उसका स्कोप क्या है? सबसे पहले खुद को समझना। कहते हैं आप संसार भर को समझ लेते हैं, बट खुद को समझना कठिन है। और जब तक खुद को नहीं समझेंगे तब तक दूसरों को तो समझ ही नहीं सकते। और वो एक कहावत भी है ना कि जो मेरे अंदर है इत पिंड उत ब्रह्मांड, कि इसके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो खुद को समझना is probably the first step towards understanding this whole universe, the world, the people, and everything. Another important scope of value education is setting goals for yourself, कि अपने happiness, what you really want. कभी कभी आज तक मुझे I am like questioning कि what do I really want in life? क्या चाहिए मुझे? पैसा, खूबसूरती, ओहदा, you know, these are areas which touch upon. आज भी अंदर सोचती हूँ, पूछती हूँ कि वो क्या चीज है जिसकी तलाश में हूं मैं अभी भी, और वो कब मिलेगी और मैं भटक रही हूँ या क्या। तो ये क्वेश्चंस हैं, आई एम श्योर हर इंसान को, हर व्यक्ति को ये कभी ना कभी जरूर टच अपॉन करते होंगे। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, को एग्जिस्टिंग विद नेचर। तो सबके साथ प्यार, मोहब्बत, समन्वय बनाकर, और इसके अंदर तो नेचर के अंदर हमारा एनवायरनमेंट आ जाता है, अदर कंट्रीज आ जाती हैं, तो बहुत सारा इसका विस्तार स्कोप है। अभी तक मैं एथिक्स और मॉरल वैल्यूज को डिफरेंशिएट नहीं किया एग्जैक्टली, तो मैं इस स्लाइड में वो करना चाहूंगी कि मॉरल्स जो होते हैं वो हमारे पर्सनल होते हैं जनरली, वेयरएज जो एथिक्स होते हैं वो ज्यादा सोसाइटल होते हैं। तो सोसाइटी जो हमारे ऊपर डूज एंड डोंट्स सेट करती है, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पर अगर पल्लू लेना एथिक्स में माना जाता है तो वहां पर वही सब फॉलो करते हैं। प्रोफेशनल बॉडीज है जैसे ICAW, जैसे आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, जितने प्रोफेशंस हैं, इवन टीचिंग, सबके अपने अपने एथिक्स हैं, अपना कोड ऑफ एथिक्स है जिसको फॉलो करना होता है, सो दैट वो राइट और रॉन्ग की पहचान बना सके। बट मॉरल्स जो है वो ब्रॉड हम गाइडलाइंस कह सकते हैं, स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, वेयरएज एथिक्स जो है वो हमारे एक्चुअल जो रूल्स हैं, जो हमारे कंडक्ट को, हमारे एक्शंस को डिटरमाइन करते हैं, दोज आर एथिक्स। आई थिंक इस बैकड्रॉप के साथ एथिक्स और मॉरल्स के अंदर क्लैरिटी कुछ मैं दे पाई होंगी।
एंड इसके साथ मैं आगे मूव करती हूँ. मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी बिफोर आई स्टार्ट विद ऑल ऑफ दिस अगेन. सो देयर वाज चाइना की किंगडम एंड देयर वाज दिस ड्यूक. तो देयर इज अ किंग एंड देयर इज ड्यूक, जैसे राजा महाराजाओं के बड़े बड़े मंत्री. एंड दिस ड्यूक हैड लॉट ऑफ वेल्थ. एंड किसी ने एक दिन अपने दोस्त को ले आया कि ये बिल्कुल निकम्मा सा मेरा दोस्त है, इसको भी आप यहाँ जॉब दे दीजिए. तो वो कहते हैं, उनसे पूछते हैं जो ड्यूक है कि डू यू हैव एनी क्वालिफिकेशन, एनी स्किल्स? ही सेज नन. तो उस पर दया करते कहते ठीक है, आ जाओ, रह लो तुम भी किंगडम में और खाओ पियो, ठीक है, समय आने पर देखेंगे. फिर एक दिन क्या हुआ, राजा को, जो ड्यूक था, उसको कुछ कलेक्शंस करनी थी अपनी, जैसे प्रॉपर्टीज होती हैं तो कुछ टैक्सेस की कलेक्शंस. तो उसने कहा कौन जाएगा. सो दिस पर्सन ही वॉलंटियर्ड कि मैं जाता हूँ. तो उसने उसको भेजा, उसने तैयारी करी एंड ही लेफ्ट. बड़ी रिमोट में जाके कोई किंगडम थी ये, वहां पहुंचा और उसने देखा कि वहां के लोग बहुत गरीब हैं. दे आर बेयरली हैविंग एनीथिंग टू ईट फॉर देमसेल्व्स. तो वो देंगे क्या वो इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस. तो उसको दया आ गई. तो उसने कहा अच्छा नहीं नहीं, बट सबको देना है. उसने रिकॉर्ड्स निकाले अपने सारे के सारे, कलेक्शंस किए और फिर कहता है बाय द अथॉरिटी ऑफ द ड्यूक आई हैव द पावर टू रिटर्न ऑल ऑफ दिस टू यू. और वो सबसे जितनी भी उसने कलेक्शंस की होती हैं वापस उनको लौटा देता है. और वो जितने पेपर्स थे उन सबको बर्न कर देता है. और राजा कह रही हूँ मैं, ड्यूक जो था, उसने एक बात बोली थी कि तुम मेरे लिए कुछ लेके आना वहां से, तो जो भी कलेक्शंस लेके आओगे पैसों का, उससे कुछ मेरे लिए सामान लेके आना. तो इसने बड़ी स्मार्टली वो कागज सारे जला दिए, जो धन एकत्रित किया था वो सारा का सारा लौटा दिया और खाली हाथ ये ड्यूक के सामने आ गया. और ड्यूक पूछता है कि तुम फिर क्या लेके आए मेरे लिए. तो बड़ा चुप, ये सन्नाटे में खड़ा होकर ऐसे देख रहा है कि मैं क्या लेके आया. फिर कहता मैं आपके लिए राइटियसनेस और गुडविल लेके आया. तो वो बहुत नाराज हुए जो ड्यूक थे, कहते ये भी कोई चीज है, कोई गिफ्ट नहीं, कुछ नहीं, क्या करूं मैं राइटियसनेस का और इस गुडविल का. चलो बात खत्म. उन्होंने तो पहले ही कहा ये तो है ही निकम्मा, तो दैट्स ओके. कुछ दिनों बाद ड्यूक की जो किंग था उसके साथ कुछ अनबन हो गई. अब अनबन होने के बाद सो बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं. सो द ड्यूक्स लाइफ वाज अंडर थ्रेट और उसको भागना था, अपनी जान बचानी थी. तो अगेन दिस पर्सन वॉलंटियर्ड, वही जो निकम्मा इंसान था, और उसने बोला कि ठीक है मैं आपको सुरक्षित ले जाऊंगा कहीं. और वो कहाँ लेके गया, गेस व्हाट, उसी किंगडम में जहां पे वो जो रिमोट प्लेस था जहां से उसने कलेक्शंस करके लौटा दी थी. और उसने पहले अपना नुमाइंदा भेज दिया कि जाके बता दो कि ऐसे ऐसे ड्यूक आ रहे हैं. वहां के लोग तो वैसे ही बहुत कृतार्थ थे, बहुत खुश थे. देवर मोर देन ओब्लाइज्ड. सो कितने माइल्स पहले से they were like standing in rows and queues to welcome the duke. और फिर ड्यूक देख के दंग रह गया, और जिस प्रेम और आदर और सम्मान के साथ उनको लेके जाया गया. and that is the day he understood the value of goodwill and righteousness. and that is the day he understood कि पैसा, धन, दौलत, ये सारी चीजें एक तरफ, और गुडविल और राइटियसनेस और जो ये प्रिंसिपल्स हैं इनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है. और ये कैसे दे बिकेम हिज सेवियर. अगर पैसा होता तो शायद वो अपनी जान ना बचा पाता, बट दिस वे ही कुड सेव हिज लाइफ. अब मैं थोड़े से इंस्टेंसेस शेयर करूंगी आप लोगों के साथ जो अनएथिकल रह चुके हैं और जो बहुत प्रोमिनेंटली हमारे युग में प्रदर्शित किए गए हैं, एग्जिबिट हुए हैं. तो सबसे पहला, आई थिंक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि मैंने क्या दिखा रही हूँ. इट इज द हॉलोकॉस्ट. इट इज द नाजीज के अंदर जो जर्मन्स का ज्यूज के अगेंस्ट जो अत्याचार था, जिसमें मोर देन 1 million पीपल वर किल्ड. ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस का मेरे को लगता है वन ऑफ द नंबर 1 इंसिडेंट्स या हैपनिंग्स, इवेंट्स, वेरी हिस्टोरिकल जो कि है. इसके बनस्पत एकदम दूसरी स्लाइड में दिखाऊंगी समथिंग एज स्मॉल एज स्टीलिंग. छोटी चोरी कर ली, छोटे से पैसे ले लिए किसी के. तो ये मैं आपको ये 2 स्लाइड इसलिए दिखाई फॉर यू टू अप्रिशिएट दैट देयर इज अ वेरी बिग रेंज, like just from maybe stealing a few couple of bucks
to taking the life of millions of people. और वो भी किस लिए? इसलिए to exterminate all those peoples because Hitler believed. और मैं अभी किसी से पहले यही बात शेयर करी थी that Hitler was a very disciplined man. वो इतना लीडरशिप में हाई रैंक्स में, how did he reach there? Obviously he must be having many good qualities. तो वो कोई ऐसा मामूली इंसान नहीं होगा, जरूर उसके अंदर बहुत सारी खूबियां हुई होंगी, बट जस्ट एक वैल्यू गलत हो जाने से, कहते हैं जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, समथिंग सिमिलर टू दैट, अकिन टू दैट, जस्ट वन हैबिट, one value system that the Jews are low people, के उनका बैड ब्लड है और वो पोल्यूट कर देंगे, तो इसलिए उनको खत्म कर दिया जाए. बस एक वैल्यू सिस्टम गलत होने से ही कमिटेड समथिंग जो कि हिस्टोरिकल बन चुकी है, लाइक एंड एक तरह का एक धब्बा है ह्यूमैनिटी में. सो यू कैन अप्रिशिएट कि कैसे कि कितनी रेंज और कितने टाइप्स के अनएथिकल बिहेवियर्स हो सकते हैं. ये तो मैंने कुछ लिस्ट ऑफ हॉलीवुड मूवीज दिखाई हैं इस लिस्ट में, जो कि नाजीज और उस टाइम के ऊपर ही हैं, एंड ईच ऑफ देम इज सो ब्यूटीफुल एंड सो हार्ट टचिंग एंड रेंडरिंग दैट आई रियली रिकमेंड दैट ऑल ऑफ यू, इफ यू हैव नॉट सीन देम, यू मस्ट सी देम. यहां से आते हैं हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ एथिक्स के ऊपर. So, ये जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ एथिक्स है, ये ओवर द इयर्स डेवलप होता गया है और प्रोग्रेस होता चला गया है. सबसे पुराने टाइम में ग्रीक फिलोसोफर्स हुआ करते थे जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली फिलोसफी को उन्होंने जो जगह फिलोसफी के वर्ल्ड में जो पाई है, आई डाउट कि किसी और प्रांत या देश ने उतनी स्टडीज और उतनी उसको अहमियत दी होगी. एंड ग्रीक के अंदर इट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस. एक जो सबसे पहला है वो है प्री सोक्रेटिक्स, दूसरा द सोक्रेटिक्स और तीसरा द पोस्ट सोक्रेटिक्स. सो जो प्री सोक्रेटिक्स टाइम एरा है, उसके अंदर पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन थे वो उस एरा को बिलोंग करते थे, उस टाइम पीरियड को. और उस समय लोग नेचर को, फिनोमेना को पढ़ते थे कि नेचुरल फिनोमेना क्या है, और उन्हीं को ही भगवान मानते थे, उनसे सीख लेते थे, उनसे लर्निंग लिया करते थे. उसके बाद सोक्रेटिक्स का टाइम पीरियड आया जिसमें सोक्रेटिस थे जो कि महाज्ञानी, संसार भर में जाने माने महाज्ञानी हैं. उनके स्टूडेंट प्लेटो और उनके स्टूडेंट एरिस्टोटल, ये तीनों ही एक के बाद एक बहुत ही फेमस और वर्ल्ड रिनाउंड थिंकर्स एंड फिलोसफर्स रह चुके हैं. और जो टीचर्स ह्यूमैनिटीज में इन चीजों को पढ़ते हैं, मैं तो खैर कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, वो आई एम श्योर इनको बहुत अप्रिशिएट करते होंगे, और आई एम श्योर इनका क्रिटिकल एनालिसिस भी होता होगा, नो डाउट. बट मुझे लगता है सारी सोच जो होती है वो समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से बदलती जाती है. तो उस युग, उस काल और समय में जो उसकी महत्ता थी तो तब की थी, और अब विद चेंजिंग टाइम्स उसमें बदलाव आता रहता है. उसके बाद हम आते हैं पोस्ट सोक्रेटिक्स, जिसके अंदर बेसिकली 4 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी थे: सिनिसिज्म, स्केप्टिज्म, एपिक्यूरियनिज्म एंड स्टोइसिज्म. अब इन चारों को अगर हम देखें तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस एक एक लाइन कहना चाहूंगी कि सिनिसिज्म में बस ये था कि लोगों का सेल्फिश इंटरेस्ट और सेल्फिश मोटिव होता है, वही प्राइम होता है. तो ये बड़ी एक कह सकते हैं कि बड़ी क्लोज्ड माइंड, अगर एग्जैक्टली नेगेटिव नहीं कहूंगी तो बहुत क्लोज्ड माइंड है, क्योंकि हम जानते हैं दैट मेनी टाइम्स बुरे से बुरा इंसान भी कभी कभार बहुत ही नेक काम कर जाता है, और बहुत नेक से नेक लोग भी से भी कभी गलतियां हो जाती हैं. सो ये कह देना दैट वाज लाइक सिनिस व्यू के ओके, बिल्कुल नेगेटिव वर्जन ऑफ द पॉसिबिलिटी. उसके एकदम विपरीत अगर हम जाएं तो स्केप्टिज्म है. स्केप्टिज्म कहता है कि ओपन माइंड है, वो कहते हैं कि जीवन का सच जानना और ढूंढना is the purpose of life. So they go into delve into finding the search for truth, और वो कुछ भी ऐसे मान के, धारणा मान के नहीं बैठ जाते तो कि this is it. So देखिए उनकी सोच है कि
things keep happening and they are like ongoingly learning. उसके बाद आता है एपिक्यूरियन. एपिक्यूरियन तो ये कहते हैं कि खुशी मिलनी चाहिए and without pain. So their whole mantra was how to find happiness without incurring pain, which is I think not probable on this planet. But उनकी ये way of thinking थी और वो इसी को ही उन्होंने अपनी philosophy और जीवन शैली और जीवन धारा माना. Stoicism कहते हैं कि एक ही पर्पस है जीवन का और वो है गॉड के प्लान को पूरा करना और गॉड को सर्व करना, जो भी हायर पावर्स है, इस तरह से. और उनका बहुत ज्यादा जो सिनिसिज्म, जो फर्स्ट वाली जो फिलॉसफी थी, उसके ही वो एक्सटेंशन एक तरह से माने जाते हैं. उसके बाद चले तो कोड ऑफ हमुराबी, वो जो पिलर जिसके ऊपर पूरे जस्टिस और न्याय के सिंबल्स बने हुए हैं, वो आता है. मैंने सोचा था कि मैं उसके भी पिलर्स की और बड़ी सारी पिक्चर्स डालूंगी, पर मैं नहीं डाल सकी, मुझे लगा कि काफी हो गया है. आगे मैं बताना चाहूंगी ह्यूमन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए. न्यूरमबर्ग, यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर पता नहीं वो, आई डोंट नो हाउ इट गॉट डिलीटेड. इट इज द न्यूरमबर्ग कोड. द स्पेलिंग इज न्यूरमबर्ग. The Nuremberg Code. तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ, during that time and during the time of Nazis, I'm sure all of you know कि at the time जब Nazis का ये सब चल रहा था, so gas chambers थे and mustard gas was and mustard gas was also used in World War II also. So उस टाइम पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे कि अगर ये गैस इंट्रोड्यूस की जाए ऑन ह्यूमन बींग्स तो उसका क्या असर होगा. ऐसी हाइपोथर्मिया कि अगर पीपल आर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम कोल्ड तो उनके बॉडी के ऊपर, उनके लिम्स के ऊपर क्या असर होएगा. टू द एक्सटेंट कि एक बार, तब की बात नहीं, उससे थोड़े से पहले की बात है, वो जस्ट रीडिंग थ्रू, कि एक व्यक्ति ने जो उस समय के जो फिजिशियंस एंड डॉक्टर्स और सर्जन्स हुआ करते थे, उन्होंने तो अपने स्लेव का लाइव बिना एनेस्थीसिया के ब्रेन की सर्जरी कर दी. तो ही स्प्लिट ओपन द ब्रेन, और उसके पिक्चर भी थे, पर मुझे वो बड़ा ही दिल दहलाने वाली पिक्चर थी कि कैसे उन्होंने स्कल को खोल के लाइव ह्यूमन बीइंग को उसको स्टडी करने की कोशिश करी एंड द पर्सन डाइड ऑफ कोर्स. तो इतने हीनियस crimes have been done, all because people believed in some value maybe जो उनके हिसाब से ठीक होगी उस समय के हिसाब से. So, or this is one slide that मैंने एक थोड़ी simple सी slide ली, and most of the time the worst part was that these subjects जिनके ऊपर testing की जाती थी, they were not even aware of it, so no consent was taken. एंड उनको पता भी नहीं होता था कि क्या साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं और कि वो मर सकते हैं. मतलब ये सब बातें उन्हें बिना बताए और उनके ऊपर कर दी जाती थी. आज के टाइम में तो खैर एनिमल्स के ऊपर भी टेस्टिंग अभी भी होती है और बहुत सारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं थैंकफुली. तो वी हैव ह्यूमन राइट्स आल्सो एंड एनिमल राइट्स के लिए भी लॉट ऑफ एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर वर्किंग एंड सपोर्टिंग फॉर देयर राइट्स थैंकफुली, so that people and they are not used as guinea pigs के कैसे भी. इसके बाद just one second please. All right, so I come down to cloning as an unethical practice. I think everybody knows कि what is cloning. तो अभी हम एनिमल टेस्टिंग और ये सब की बात कर रहे थे, और उसके साथ साथ ही cloning is तो when the DNA of organisms is taken and a duplicate copy is created. आपको पता होगा सबसे पहले स्कॉटलैंड में एक शीप डॉली नाम की क्लोन हुई थी, और उसके बाद अभी क्लोनिंग ऑफ ह्यूमंस तो एज सच नहीं होती है, बट हाँ क्लोनिंग ऑफ ऑर्गन्स
is allowed. तो cloning of organs and body parts is legal क्योंकि वो therapeutic cloning के अंडर आता है. But human beings को clone करना is a perfect example of unethical practices because every human being is unique and they have a right, a very fundamental right, जो कि breach होता है कि because your existence is at stake with the presence of another person who is your duplicate. So that is why cloning is a unethical practice. और मैं इसकी पिक्चर ढूंढ रही थी क्योंकि मैंने इसकी भी पिक्चर लगाई थी बट मुझे अभी नहीं मिल रही है. So we will move on to the next area where lot of unethical practices happen, and that is corporate fraud. So corporate fraud में तो जितनी भी कॉमर्स की टीचर्स हैं उनको बहुत अच्छे से कुछ नाम जैसे सत्यम, जैसे नीरव मोदी, जैसे विजय माल्या, मतलब ये वो सारे धुरंधर लोग और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने 9-10 हजार करोड़ रुपए इंडियन बैंक्स से siphoned off the money and अपना ही मानकर और उसको लेकर and they escaped the country also. So Vijay Mallya, he owes almost like 9,000 crores from 17 banks in India. और केस चल रहा है और repatriation और ये सब चलता रहता है, but really to get somebody to books still part of the deal. ऐसे ही सत्यम, इतनी बड़ी कंपनी and it was accused of falsification of accounts. और जब ये आउट हुआ तो जो रामलिंगन राजू जो CEO थे and share prices fell from 544 जो पीछे चल रहे थे to 11.50, 11 रुपए, 544 से 11.5 रुपए पे शेयर प्राइस फॉल किया. Such a big drastic dramatic fall because people just lost faith. So we can imagine कि एक ऐसी हर्षद मेहता, मतलब एक व्यक्ति के कर्मों का फल कहां तक वाइड स्प्रेड. मैं ये केसेस पहले बता रही हूं और मैं थियरीज पे बाद में आऊंगी. अगर मैं पहले थियरीज डिस्कस करती आपके साथ तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता क्योंकि मुझे लगता है कि थियरीज पढ़ते पढ़ते लगता है कि आधी समझ में आई, आधी तो ऐसे ही. पर ये लाइव केसेस के थ्रू आई थिंक आई एम एबल टू एक्सेस यू बेटर, but I will of course come down to theories as well shortly. So corporate frauds, and we had this human testing and bribery. वही corporate frauds and scandals के अंदर bribery भी आती है as an unethical practice. Unfortunately very prominent in India. मतलब कहते हैं कि India is a polluted country दो वजहों से. एक तो environmental pollution है, political pollution है और bribery. I mean these are the areas जिसके लिए हम संसार भर में जाने जाते हैं. and दुख होता है कभी कभी अपना ये situation देखते हुए. Another area, interesting area I think जो most teachers को interest करेगा is plagiarism. So plagiarism and copyright, क्योंकि हम सब टीचर्स हैं और अब UGC ने जो एक तरह से डंडा घुमाया है, you excuse me for using that language, वैसे बहुत अच्छा रहा. So there's a wave of FDPs, a wave of literary work. So somewhere मुझे लगता है कि as teachers हम थोड़ा सा restrict हो गए थे through teaching activities. कहीं हमारी learning slow हो गई थी, but this kick that we got and everybody is like now excited and moving and so that way it's nice. और इस सब के अंदर तो ये वाला जो part है वो और भी ज़्यादा relevant हो जाता है क्योंकि जब हम किसी और व्यक्ति का किया हुआ काम अगर कॉपी करते हैं या किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट या शेयर करते हैं और बिना उसको recognition दिए या बिना साइट किए उसका काम, तो वो plagiarism की कैटेगरी में आता है. थोड़ा सा हटके कॉपीराइट्स होता है क्योंकि कॉपीराइट्स के अंदर होता है कि एक्सक्लूसिव राइट्स आर ग्रांटेड टू द क्रिएटर ऑफ समबडी जिसने ओरिजिनल वर्क करा है. तो और वो अगर रजिस्टर होता है तो वो एक लीगल इशू बन जाता है. अगर किसी ने अपने कॉपीराइट्स में रजिस्टर कर रखे हैं तो केस भी कर सकते हैं. प्लेजरिज्म उतना सीरियस नहीं होता जनरली, लेकिन उसके अंदर जो प्लेजरिज्म है दैट इज मोर ऑफ एन एथिकल इशू, whereas copyrights
is more of a legal violation. And all plagiarisms are not copyrights, because किसी का दूसरे का कितना ओरिजिनल काम है, it depends on that, और उसने उसके ऊपर infringement rights लगाए हैं नहीं लगाए हैं. And likewise, all copyright infringements are also not plagiarisms. Just a word of note कि ये generally written material से related होता है, पर जब हम patents और trademarks की बात करते हैं, मुझे लगा जब ये words introduce कर ही रही हूँ, आप लोगों के सामने रख ही रही हूँ, तो थोड़ा सा उनके बारे में बता देती हूँ कि patents generally जो होता है वो discoveries और innovations के connection में होता है, और जो trademarks होते हैं वो words, symbols और designs से रिलेटेड जब किसी को हम कॉपी करते हैं और उसका कोई अपने राइट्स होते हैं, then we call it trademarks. From here, and this is again a slide that most students say कि what's wrong with my thing, I copied it directly from the internet. यहाँ से अब मैं ethical theories पे वापस लौट रही हूँ, थोड़ा सा ethical cases और examples discuss करने के बाद. Very briefly, utilitarian theory. Utilitarian theory says that अगर एक गलत काम करके या एक छोटा सा कुकर्म करके अगर हम large masses का भला कर सकते हैं, so then it is not unethical. This is the utilitarian approach. For example, a case in point was there was plane hijack long back, and there were 20 hostages. और ये कंडीशन थी कि अगर एक हॉस्टेज जो है उसको मार देते हैं तो बाकी 19 को वो रिलीज एंड रिलीव कर देंगे. इट्स अ टफ कॉल, क्योंकि हर जिंदगी बहुत कीमती है और हर की अपनी वैल्यू है, बट इन द लार्जर इंटरेस्ट it was decided कि वो एक को मार दिया जाए to save the others. So this is an example of utilitarian theory, जहां greater good के लिए हम थोड़ा सा sacrifice करने को राजी हो जाते हैं. The second is universalism, which means कि जो भी सही या गलत है वो सब पे अप्लाई करता है. लेकिन मैंने थोड़ा इसके ऊपर और गौर फरमाया. एक्सेप्शंस तो हर थियोरी के होते हैं ना, तो इसमें एक एक्सेप्शन ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं जैसे कैनिबलिज्म. वी डोंट ईट ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज दे बिलोंग टू आवर सेम रेस. ऑल्दो हम एनिमल्स को फॉरगो और सैक्रिफाइस कर सकते हैं, बट कैनिबलिज्म भी 99% वर्ल्ड के अंदर तो अलाउड नहीं है, अनएथिकल है, इमोरल है, इलीगल है और नहीं प्रैक्टिस किया जाता. बट देयर आर स्टिल areas and tribes still even today जहां पर in parts of Africa और अंडमान निकोबार में तो recently तक था. When I was visiting there about like 20 years back, तब तक मुझे बताया गया था कि वहां पर अभी भी ऐसे places हैं जहां पे cannibalism is followed. So वहां उनके लिए ठीक है, वो उनके लिए वो unethical नहीं है, because they are groomed and reinforced like that. तो वही उनकी शिक्षा का हिस्सा बन चुका है. So they are fine with it. The next theory is the deontological theory, which is very simple, subtle. It just says that all people should be treated with respect and dignity. So हर एक इंसान अपने आप में डिजर्व करता है, तो उसमें ऊंच नीच, जाति, भाव, भेद, औहदा, धन, दौलत, ये सब चीजों को इग्नोर करके, वही बात जो भी मैंने शुरू में बोली थी महात्मा गांधी की, अल्बर्ट आइंस्टाइन की, कि सबको हम डिग्निटी के साथ ट्रीट कर पाए. द नेक्स्ट थियोरी इज कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, व्हिच स्टेट्स कि हमारे एक्ट से ज्यादा उसका आउटकम क्या होगा उसके ऊपर वो ज्यादा गौर फरमाते हैं. और बहुत इंटरेस्टिंग एक केस तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक बार एक जंगल में एक ऋषि मुनि बैठे हुए थे और उनके सामने से एक गाय दौड़ती हुई गई, पीछे पीछे कसाई दौड़ता हुआ आया और उसने उस ऋषि मुनि से पूछा कि प्रभु बताइए कि यहाँ एक गाय मेरी भाग गई है, तो वो किस दिशा में गई है. और आगे की स्टोरी तो सब जानते हैं कि
जो ऋषि मुनि थे वो झूठ बोले और उन्होंने दूसरी दिशा में इशारा कर दिया। तो बोला तो उन्होंने झूठ, उन्होंने तो गलत किया, अनएथिकल काम किया, लेकिन उसमें आउटकम क्या था? वो भलाई थी। सो इससे ये भी बात हम समझ सकते हैं that there is no absolute truth or lie, there is no absolute right or wrong. हम कई बातें हैं इसमें, डिफरेंट लाइक यू नो डायमेंशंस टू इट। एक तो ये कि कॉन्सिक्वेंस, आउटकम क्या हो रहा है, कि वही बात कि इतना ही सच बोले कि जितना दूसरे को हजम भी हो जाए। ऐसा सच जो कि बहुत कड़वा है और जो दूसरे को दुखा देगा और यू नो डिप्रेस कर देगा, वो भी तो किसी काम का नहीं है। तो उस जो गाय थी उसका जीवन बचाने के लिए उन्होंने झूठ तक बोल दिया, तो जो उनका प्रण था उसको भी त्याग दिया उन्होंने एक पल के लिए। तो ये हमारी पौराणिक कथाएं हैं जिनको समझकर हम निर्णय कर सकते हैं कि सच और झूठ की, तभी कहते हैं कि इट इज ब्लाइंड, यू नो, जस्टिस इज ब्लाइंड। उसको इतना ब्लैक और व्हाइट हम नहीं कर पाते। सो देयर आर मेनी ग्रे एरियाज व्हिच नीड टू बी अंडरस्टूड। The next is the relativism. Relativism basically says that the morals and obligations are based on individuals' environment. कि जैसे हम लोग सब relatively, अगर जैसे मैं एक शर्मा परिवार में पैदा हुई थी और मेरे माँ बाप नॉनवेज नहीं खाते थे, तो मैं भी नहीं खाती, तो ये तो मेरे अंदर इनबॉर्न ही आ गया आसानी से। यही अगर मैं किसी नॉनवेज कंज्यूमिंग फैमिली में पैदा हुई होती तो मैं शायद नॉनवेज खा रही होती, और या शायद लेटर स्टेज इन लाइफ में उसको वे आउट करती और डिसाइड करती वेदर आई वांट टू बी नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, वीगन और व्हाटएवर ऑप्शंस आई हैव। सो व्हाट इट सेज इज कि हम लोग जो एनवायरनमेंट होता है उससे प्रभावित होते हैं, और इसीलिए हमारे जो एथिक्स हैं वो भी रिलेटिवली बदलते हैं। केस इन पॉइंट अमेरिका वर्सेस इंडिया, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की जीवन शैली, मैं इसके ऊपर इलैबोरेट नहीं करूंगी। आई थिंक सभी लोग जानते हैं कि उनके कल्चर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कल्चर से बहुत विभिन्न हैं, बहुत। और एक बात और बताना चाहूंगी कि वहाँ इंडिविजुअलिज्म, आई को इतना ज्यादा प्रमोट किया जाता है, और क्या कहूँ, अनफॉर्चुनेटली कहूँ, इंडिया में भी जितने जैसे साइकोलॉजिस्ट एंड ये वाले जो श्रेणी है, एंड आई एम श्योर यहाँ पर कोई नहीं है हाथ जोड़कर पहले ही आपसे एक्सक्यूज मांगूंगी, नॉट टू ऑफेंड एनीबॉडी, बट हम कितना बोलते हैं बच्चों को उनका एग्जिस्टेंस, पर आप देखिए इतनी एग्जिस्टेंस और इतनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के बाद भी कितना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वहां, कितना डिप्रेशन है वहां। मतलब अगर इतनी आइडेंटिटी को इतनी हवा दी गई होती ओवर द इयर्स, राइट फ्रॉम इन द ग्रूमिंग स्टेजेस, तो फिर तो ये सब नहीं होना चाहिए था ना। बट दिस इज समथिंग व्हिच इज लाइक थॉट प्रोवोकिंग, पीपल शुड रियली। और हमारे कल्चर में आई को, आई मी माइन को हमेशा पीछे रखा है ना। हमेशा पूरे वर्ल्ड इज अ फैमिली, ये हमारी शिक्षा है हमारे कल्चर की, और हमेशा दूसरे को प्रधान रखा गया है। तो ये सोचना कि उसके अंदर आई मर जाता है और सैक्रिफाइस का ही जीवन रह जाता है, इट्स नॉट टोटली ट्रू। ऑफ कोर्स उसको भी डिसएडवांटेज किया, उसको भी ऑल्टर किया, उसमें भी कमियां आ गई सोच में, बट ओवरऑल यू नो डिनाई कर देना हमारी कल्चर को और सिर्फ उन्हीं को एप करना और कॉपी करना, और वो इंडिविजुअलिज्म और आई और उसको प्रमोट करना जस्ट ब्लाइंड फोल्डेडली, आई थिंक पीपल नीड टू रीथिंक अबाउट इट। इट्स टाइम वी कम टू एथिकल इगोइज्म, which is that self interest is above the interest of all। तो उनका तो बिल्कुल क्लियर कट है कि मैं ही नहीं तो फिर बाकी संसार ही क्या है। And lastly, ethical subjectivism, which says that no particular theory can objectively explain, you know, ethics, और कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है और ट्रू नहीं है, which I think is pretty logical given the context.
अभी इन थियरीज के बाद, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं zen और बुद्धिस्ट टीचिंग्स के ऊपर आऊंगी, सो आई एम कमिंग टू दोस, और उनके देयर आर 5 precepts. The 5 precepts are that I will revere all life. सबसे पहला ये है. तो इट इज बेसिकली अबाउट नॉन वायलेंस. अगर हम इसको अपने कल्चर के साथ देखें तो अहिंसा, नॉन वायलेंस, नॉन किलिंग, अहिंसा. The second is I will respect the property of others and I will not steal. अस्त्या, कि जो दूसरे की प्रॉपर्टी है मैं उस पर नजर नहीं रखूंगा, चाहे वो धन दौलत जो भी चीज है. तीसरा, I will be conscious and loving in my relationships and I will not give in to lust. अगर आप योगिक कल्चर में भी देखें तो ब्रह्मचर्य, so not leading a life full of lust, अपने ऊपर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, वही चीज यहाँ पर भी दी गई है 3rd पॉइंट में. 4th पॉइंट में यह है कि अबाउट ऑनेस्टी, सो दैट इज अबाउट सत्य. ये भी एक हमारा मूल मंत्र है हमारे इंडियन कल्चर का और हमारे हेरिटेज का. एंड देन द वेरी लास्ट इज आई विल एक्सरसाइज प्रॉपर केयर ऑफ माय बॉडी एंड माइंड. और ये इसको मैं समझूंगी शौच और स्वाध्याय, क्योंकि जब हम स्वाध्याय करते हैं, हम अपने को स्टडी करते हैं और स्क्रिप्चर्स को स्टडी करते हैं, तो हम अपने माइंड को क्लीन करते हैं. और शौच बॉडी का भी हो गया, फिजिकल. तो अगेन ये सारी चीजें जो बुद्धिस्ट और zen precepts जो हैं, they are very much akin to the Indian traditions and Indian culture. So the next slide talks about that yogic culture only. और योगिक कल्चर के अंदर यम और नियम, और ये यम और यम अष्टांग योग, वो जो 8 limbs ऑफ योगा है, कभी मौका मिला तो उसके ऊपर भी मैं जरूर चाहूंगी. अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू शेयर माय थॉट्स ऑन इट. तो यम और नियम 5 दिए गए हैं, और ये सबसे पहले मूल कंडीशंस हैं. तो जो पीछे और उसके बाद हमारा जो प्राणायाम और आसन और ये सब चीजें बाद में आती है, और स्वाध्याय, और जब समाधि की बात आखिरी जो आती है. तो अगर हमने इन 8 स्टेप्स के ऊपर अगर चलना है तो सबसे पहले यम, एंड यम इज आवर डीलिंग विद अदर्स. सो बिफोर, जो महर्षि पतंजलि हैं, आप सोच सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले पर्सनल क्लेनलीनेस की बात नहीं करी, उन्होंने पर्सनल करेक्शन की भी बात पहले नहीं करी. उन्होंने पहले यम मींस जो टुवर्ड्स अदर्स है उसके ऊपर पहले बात करी. और उन्होंने सबसे पहले अहिंसा, which is not harming people, सत्य, truthfulness, अस्त्य, which is non-stealing, brahmacharya, and अपरिग्रह, which means non-possessiveness, कि सब चीजें हम मॉडरेशन में ही रखें. ये नहीं कि हम हड़प लें, औरों का भी शेयर ले लें. जैसे वो शुरू में स्लाइड दिखाई थी कि वो एक लेडी उस आदमी के ऊपर चल के और अपना नैया पार करती हुई जा रही है, वो वाला कॉन्सेप्ट. और यम के बाद हमारे नियम आते हैं, जिसके अंदर शौच आ गया, क्लेनलीनेस हो गया, कंटेंटमेंट आ गया, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी हो गया, सरेंडर, ईश्वर के प्रति सरेंडर करना, और ये सारी बातें आती हैं. ये पार्ट ऑफ एथिक्स है, ये पार्ट ऑफ हमारे इंडियन कल्चर है. दे आर इनग्रेन्ड, दे आर इम्बाइब्ड. और मुझे ऐसे लगता है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेकर कहीं ना कहीं हमारे जीन्स के अंदर, वी हैव बीन इन्फेक्टेड बाय देम. तो हम कितना भी कर लें, चाहे ऊपर से हम लोग ब्राइबरी ये वो छोटा मोटा कर लेते हैं, मुझे डीप डाउन दीज थिंग्स स्टिल एग्जिस्ट इन अस. आज भी हम गंगा जाते हैं, चाहे वो कितनी भी मैली हो गई है, फिर भी उसको जो हम देखते हैं तो एक पवित्रता की एक भावना हमारे अंदर जागती है. तो वो मॉरल्स आज भी हमारे अंदर हैं. देयर इज अ वेरी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, रॉब विलियम या रॉब विल, मुझे नाम अभी थोड़ा सा भूल रहा है उनका. He conducts sessions on motivation with people. मुझे अगर याद आएगा तो I will share that with you. उन्होंने यही बोला, कहते he's in America. उन्होंने ये बोला कि अमेरिका में people are well off. There is beauty everywhere. And he has visited India a couple of times. कहते when I go on the roads, on the streets, so there are people half clothed, hungry, begging, and miserable. In his language.
But he says that the satisfaction and that the light that I see in their eyes. So he could see that. जो कहता है जो बाहर उसको वहां जहां सारे कंफर्ट्स हैं, सब सुख सुविधाएं हैं, उनको वो वहां नहीं मिली. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात जरूर है और उसको हम उजागर करें, वही ठीक रहेगा. भगवत गीता का उपदेश और जो उनका संदेश, और मैंने इसको ऐसे ही लिखा, उपदेश भी और संदेश भी. उन्होंने, मैं इसको ऐसे समझूंगी जैसे जिसके अंदर सरेंडर भाव है, जो प्रभु के समर्पित है, या प्रभु मीन्स यू मे बी गॉड, मे बी चाहे आप उनको किसी फिजिकल फॉर्म में माने या उनको पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हुए इन द फॉर्म ऑफ नेचर और हायर फोर्सेस की तरह समझे. तो जो इनको सरेंडर करता है उनके लिए तो वो उपदेश हो गया, और जो सरेंडर नहीं करते हैं उनके लिए वो मैसेज है, उनके लिए वो संदेश है. सो इट्स अ मैसेज. तो माने तो ना माने तो, विद दैट लिबर्टी एंड द फ्रीडम. और इसके अंदर भी अगर आप गो ओवर करेंगे, आई विल नॉट रीड आउट ऑल ऑफ देम, बट थोड़ा सा देखते हुए, एब्सेंस ऑफ सेल्फ वर्शिप, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, के अपने को ही नहीं महान मानना, इंजरी टू अदर्स, इंटेग्रिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सच बोलने की हिम्मत, करेज, सर्विस टू गुरु, कि गुरु के समर्पण करना, गुरु के आगे, क्लेanलीनेस ऑफ बोथ बॉडी माइंड, मास्टरी, कंट्रोल ऑफ माइंड, कि जो भी ये 13वें जो चैप्टर ऑफ 13 चैप्टर जो है, अध्याय है, उसके ये सारे जो वैल्यूज दी गई हैं, ये वो वाली है, मास्टरी ओवर द माइंड. बिकॉज, और उन्होंने कैसे एग्जाम्पल लिया है कि कैसे एक रथ है और एक सारथी है, और कैसे हमारी इंद्रियां हैं, और कैसे जो सारथी है वो इंद्रियों के ऊपर, और वो जो घोड़े दौड़ रहे हैं इधर से उधर दिशाओं में, कैसे उनके ऊपर लगाम बांधकर उनको रोकने की कोशिश करता है. तो दिस इज अगेन एग्जाम्पलरी. मुझे नहीं लगता कि हमारी भगवत गीता की बराबर का कोई भी और स्क्रिप्चर इतने लेंथ का और इतने डिटेल्स के साथ, और जो कि आज इतने हजारों सालों के बाद भी उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था उस समय में होगा. So and he also talks about absence of self, egotism, I, me, mine, dispassion towards objects. He also talks about कि कैसे हमें जीवन के अंदर धीरे धीरे, कि कैसे 4 स्टेजेस हैं लाइफ के अंदर, और कैसे वानप्रस्थ के प्रति हमारे को, जैसे एज वी ग्रो ओल्ड, तो गृहस्थ से वानप्रस्थ के ऊपर हम चलें, और कैसे लाइफ को धीरे 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 छोड़ना. मतलब ये नहीं कि हम अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देंगे या खाना तज देंगे, बट हाँ इतनी सोच और समझ कि जो हम खा रहे हैं ये क्वेश्चन करें अपने से कि इज इट worthwhile, is it contributing to me, और इसको ग्रहण करके मैं क्या आउटपुट दे पाऊंगा, या मैं खुद ही बर्डन बन जाऊंगा औरों के ऊपर. और जैसे कि सदगुरु, जिनको मैं काफी फॉलो करती हूँ, वो भी कहते हैं कि योर बॉडी इज what you eat becomes your body. और हमारे शास्त्र भी ये पहले बोल चुके हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन. इसीलिए उन्होंने यही बोला कि जो अन्न है, मीन्स द सोर्स ऑफ द वेल्थ. अन्न मीन्स पहले जमाने में वो अन्न हुआ करता था क्योंकि खेती बाड़ी वॉज द प्राइम प्रोफेशन, बट आजकल जो हम कमा रहे हैं उसका कितना वो सात्विक है, क्योंकि सिर्फ सात्विक भोजन वही नहीं जो फ्रेश है या जो प्यारी भावना से और सुंदर भावना से बनाया गया है. इवन द मनी जिससे उसको हमने अक्वायर किया है वो भी सात्विक होना जरूरी है, और सात्विक होंगे तभी अंदर से वो प्रफुल्लता, वो खुशी, वो खूबसूरती, वो चैन, वो जो जीवन की जो क्वालिटीज हैं वो उभर कर निकलेंगी. आगे नॉन अटैचमेंट, उन्होंने बोला कि अटैचमेंट, इवन बुद्धिज्म में भी बोला है कि द मूल कारण, द कॉज ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट एंड डिजायर्स, क्योंकि हमारी बहुत सारी डिजायर्स हैं, क्योंकि हम अटैच्ड हैं, एंड दोज ओनली become the reason
for all the suffering in life. आगे चल के ध्यान के ऊपर उन्होंने बहुत emphasis किया है कि कैसे the flow of thoughts which are concentrated on a single point, single mindedness. बिना सिंगल माइंडेडनेस के तो कोई भी काम हमारा अच्छा अंजाम पा ही नहीं सकता है. तो किसी से बहुत फेमस कोई ऑथर रहे थे, उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने फेमस हैं तो आप अपनी वो बताइए कि क्या कारण है जिसकी वजह से आप इतने फेमस हुए और आपकी इतनी बुक्स चली एक्सेट्रा. तो उन्होंने एक ही बात बोला, कहते हैं मैं 5 मिनट तक एक ही बात के ऊपर ध्यान लगाकर बैठ सकता हूँ. बस मेरे में यही एक खूबी है जिसकी वजह से मेरी जितनी भी प्रशंसा, जितना भी नेम फेम मैंने वर्ल्ड में कमाया है, all attributable to just one single pointedness and being steady. तो ये तो बहुत गीता का उपदेश है ही कि धूप छांव, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम आए, और मौसम तो आते ही हैं और मौसम होते ही बदलने के लिए हैं. We remain steadfast. हम अपने ध्येय से ना भटकें, हम अपनी इंसानियत से ना भटकें. It requires a lot of courage, a lot of commitment towards self. It is tough, I understand, but it is possible. It is not impossible. It is possible. और उनको पार करके जो जीवन का जो सुख और जो मजा है वो पाने के बाद ही अनुभव किया जा सकता है. And और भी है the search for truth, wisdom, you know, ये सारी slides उन्हीं चीजों को आगे व्याख्या कर रहे हैं. अगर मैं इंडियन सिनेरियो की बात करूं, सो इन इंडियन सिनेरियो ये कुछ कमिटीज हुई और एजुकेशन पॉलिसीज जितनी भी हुई हैं. सबसे पहले सी प्रकाशा कमेटी थी जो कि 1959 में थी, और उन्होंने यही कहा था that the teaching of moral and spiritual values is desirable in India. वहां से वो स्टोरी स्टार्ट हुई. उसके बाद कोठारी कमीशन आई 1968 में, फिर 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई. उन सब ने यही रिएटरेट करा कि स्पिरिचुअल एजुकेशन इज पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज. दैट और स्पिरिचुअल एजुकेशन आई थिंक इज वेरी मच रिलेटेड टू मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, inclusiveness, morality. So it all centers around these attributes of life. और इन सब ने इसके ऊपर पॉइंट आउट करा और एम्फसाइज किया कि moral education is equally important than the other knowledge जो हम acquire करते हैं. From here I'll move on to my next slide. Again, this is a very interesting slide. And मैं इतने सारे movies के examples दे रही हूँ. Movies मुझे लगता है are more like living books. Book तो 3 घंटे में या 2.5 घंटे में नहीं पढ़ी जाती, पर movies तो खत्म हो जाती हैं 2 से 3 घंटे में. Not that कि मैं books को undermine कर रही हूँ. Book को पढ़ने का जो रास और जो एक्सपीरियंस है वो तो unimaginable है. When you're reading a book, you are living with that book for a couple of days and enjoying the company of the book. But the kind of lifestyles that we have today, तो books अब थोड़ी सी कम होती जा रही हैं. Thanks, अब Kindle भी आ गया है तो बुक वो कम होता जा रहा है. Although मैं जरूर चाहूंगी कि अभी संसार से कभी बुक्स खत्म ना हो, पर हम मूव तो उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं. So in one of the movies of Bruce Lee, he takes the example of water and he says, water is formless, water is shapeless, be like water. उन्होंने ये बोला, कहते वाटर जो है जिस कप में डाल दो वो उसी का ही रूप ले लेते हैं. इसको हम गलत ना समझे कि इसको ऐसे ना समझे कि कोई अपना दीन ईमान नहीं है. इसका मतलब ये कि वो कितना अकोमोडेटिव इन नेचर है कि जहां गया वहीं वो रास गया, वहीं रम गया. इट इज दैट एट्रीब्यूट. और ऐसे ही उन्होंने एक और कोट दी वाटर के ऊपर ही कि वाटर कैन फ्लो एंड इट ऑल्सो क्रैशेस. तो कोई अगर वाटर को ये कहेगा
कि वाटर तो ऐसे फ्लो करके उसका कोई दी मान नहीं, फ्लो कर गया। तो ये भी उन्होंने ये जताया कि इट क्रैशेस ऑल्सो, वो धीरे से बह के भी चला जाता है, और जहां उसको ललकारा जाए या एनी ऑब्स्टिकल, तो वो स्मैश करना भी जानता है। एंड आई थिंक एक ह्यूमन बीइंग के अंदर यही सारी क्वालिटीज उजागर करने की जरूरत है, कि हम फॉर्मलेस और शेपलेस भी हो जाएं, कि हम मिक्स हो जाएं, जहां पर भी हैं रम जाएं उस एनवायरनमेंट में, और जहां जरूरत पड़े वहां स्टैंड लेकर खड़े भी हो पाए, और जहां बह जाके चुपचाप जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, वहां नम्र होकर भी अपना निकले आगे वहां से। So these are the 7 attributes or the virtues of water which I would like to mention here. सबसे पहले उन्होंने बोला ह्यूमिलिटी, क्योंकि पानी जो होता है हमेशा नीचे की तरफ जाता है, तो कितनी हम्बलनेस है उसके अंदर, that we can acquire in ourselves. The second, सिर्फ पानी जहां भी जमा होता है वो हमेशा डेप्थ में से चला जाता है, लाइक जितना नीचे सीप इन करके पानी हमेशा डेप्थ होती है, ऐसे ही। और उसके अंदर क्या है, जो ट्रेजर्स हैं वो ऊपर से नहीं पता चलते, उसी प्रकार से एक इंसान के अंदर भी बहुत सारी गहराइयां होती हैं, तो इट्स ओनली व्हेन यू डाइव डीप इनटू देम। हम अगर ऊपर से लोगों को देखते हैं और जज करते हैं, समटाइम्स वी मिस आउट ऑन सो मेनी क्वालिटीज दैट दे मे बी हैविंग। और जो सा चश्मा लगा ले, वो कहते हैं ना सावन के जो हर सब कुछ हरा ही दिखता है, जिसने पीला चश्मा लगा लिया उसको सब कुछ पीला ही दिखेगा। तो तीसरा भी पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि इट्स नॉन जजमेंटल, वाटर इज नॉन जजमेंटल एंड इट्स ऑलवेज गिविंग। और वो ये कभी नहीं सोचता कि जब वो धरती से बहता है कि मुझे इस पेड़ पौधे को पानी देना है, इसको नहीं देना है, कभी भी वो रिसीवर को जज नहीं करता, वो अपने एक सिंगल एट्रीब्यूट पे रहता है, गिविंग। एंड अब्दुल जे कलाम जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने ये बहुत खूबसूरत कहा, उन्होंने कहा द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स इन माय लाइफ वर व्हेन आई वाज गिविंग। सो गिविंग एज एन एट्रीब्यूट। इवन बीके शिवानी जी ब्रह्म कुमारीज की जो इस समय बहुत प्रख्यात स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमेशा यही कहते हैं कि संसार में सभी चाहते हैं कि मुझे मिल जाए मिल जाए, बिल्कुल ऐसे ही वो एक्ट करके बोलती हैं। तो कहते हैं देने वाले तो बचे ही नहीं है, तो जितना देंगे, और ये तो वैसे ही लॉ ऑफ नेचर है कि इट अट्रैक्ट्स, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वार्थ रखकर भी दे सकते हैं कि जितना देंगे वो वापस मिलेगा। वेल दिस इज ओनली ऑन अ लाइटर नोट, आई होप यू डोंट टेक इट सीरियसली। ऐसे बीच बीच में कुछ चीजें हंसाने के लिए, जगाने के लिए भी बोल रही हूँ। सो आई होप दीज आर नॉट ऑब्जेक्शनेबल एंड डोंट जज मी ऑन दीज अगेन। सो द नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ वाटर इज इंटेग्रिटी, कि इंटेग्रिटी मीन्स द ट्रुथफुलनेस। कैसे आईना बन जाता है, पानी जब स्थिर हो जाता है तो वो आईना का रूप ले लेता है, आप पूरी अपनी आभा उसके अंदर देख सकते हैं। सो इट रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग ट्रुथफुली, सो दैट्स इट्स इंटेग्रिटी। देन कैपेबिलिटी, जो भी मैंने स्मैशिंग की बोल रहा कि एक कमरे में या एक वो टंकी में, वाटर टैंक में एक छेद हो, वन टाइनी, इट विल फ्लो आउट, पूरी टंकी खाली हो जाएगी। इट मे टेक टाइम, और मतलब इतना स्लो मोशन में इट कैन मूव आउट। एंड और जब सुनामी आता है, जब टॉर्नेडोज और ये जब, तो कितना कहर मचाते हैं। सो इट हैज द पोटेंशियल, इट हैज बोथ द कैपेबिलिटीज, बिल्कुल निमाना, नम्र होके शांत, एंड वेरी एग्रेसिव नेचर एज वेल। ऑन द अदर हैंड flexibility is, water exists in 3 states, in 3 forms: solid, liquid and gaseous. यही उसकी खूबी है कि वो कभी तरल बन जाएगा, कभी पत्थर ऐसे बन जाएगा बर्फ के रूप में, और कभी बरस जाएगा पानी के रूप में। तो और यही हमारी एज ह्यूमन बींग्स। और जब मुझे लगता है जब श्री कृष्ण जब ये कहते हैं गीता में, उसके सार में, कि साम दाम दंड भेद यूज करने की बात उन्होंने कही है, तो आई थिंक उनका पीछे जो मंशा है वो यही है कि हम फ्लेक्सिबल हो सके समय के हिसाब से, जिसको आजकल की मैनेजमेंट गुरुज क्या कहते हैं, सिचुएशनल मैनेजमेंट। सो सिचुएशनल मैनेजमेंट इज नथिंग बट साम दाम दंड भेद, इट्स नथिंग बट
being flexible like nature. And then the last, Sheikh, please आप अपने आप को mute कर लीजिए. Sheikh Bashir. Okay. And great timing, the very last attribute. कभी जब बर्फ पड़नी होती है तो बर्फ पड़ती है. जब बारिश थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा कि जून 15 की बजाय जून 25 हो जाएगा, या वो एक अलग बात है. बट देयर वाटर इज ऑलवेज फॉलोइंग ग्रेट टाइमिंग. अपने ऋतु के हिसाब से आता है और जाता है. सो दीज आर द 7 वर्च्यूज दैट वी कैन लर्न फ्रॉम वाटर. सो इन दिस लेक्चर मेरी इंटेंशन यही रही है कि मैक्सिमम एग्जाम्पल्स दे सकूं, थियोरी के साथ लेक्चर, एग्जाम्पल्स, स्टोरीज को इंटीग्रेट कर सकूं, कि ताकि ये खाली एक लेक्चर जो हमने सुना और जिसका थोड़ा बहुत 5-10% रजिस्टर कर गया और बाकी वो ना होकर ये कहीं ना कहीं आपके दिल जिगर कहीं टच करे, और यू नो दैट क्रिएटिंग दैट स्पार्क. सो दिस इज द होल इंटेंशन. एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज know thyself. This is again a very interesting slide. I'm not sure, ये मैंने एक लैंडमार्क एक प्रोग्राम था जो मैंने किया था कई साल पहले, उसके बड़े सारे प्रोग्राम्स थे, तो वहाँ मैंने ये सीखा था. और उन्होंने एक बोर्ड के ऊपर, यहाँ तो मैंने ऐसे उन्होंने एक राउंड सर्कल बनाया था और उसके अंदर उन्होंने ये दिखाए थे, 4 बताए थे. तो लाइक बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स, ऐसे 4 सेक्शंस, जिसके अंदर सबसे पहला सेक्शन है आई नो दैट आई नो. सो फॉर एग्जांपल, I know that I teach in Delhi University. I know that I'm a teacher of commerce. So ये तो हो गया I know that I know about myself. The second is I know that I don't know. अब जैसे पहले वाला केस, I know how to drive like a car, a scooty, but I know that I don't know how to fly a plane. तो ये कुछ चीजें जिनको मुझे पता है कि मुझे ये नहीं आती. ये भी सब बातें लोगों को पता होती है कि क्या नहीं आता. तीसरी और चौथी बहुत इंटरेस्टिंग है, ज्यादा इंटरेस्टिंग है पहली 2 से. आई डोंट नो दैट आई नो, कि मुझे पता नहीं कि मुझे मालूम है. जैसे अगर मैंने बहुत साल पहले साइकिलिंग करी बचपन में और उसके बाद फिर देयर इज अ ब्रेक ऑफ से 10-15 years, सो आई रियली डोंट नो वेदर आई स्टिल नो हाउ टू साइकिल और नॉट. सो तो जब चढ़ूंगी और गिरूंगी या चला पाऊंगी तो पता चलेगा कि whether I know or I don't know. So as of now, I don't know that I know. ये वो 3rd category हुई. And then the very last category is I don't know that I don't know. This is the most interesting. And believe me, I really want कि कोई मुझे guess करके बताए कि I don't know that I don't know की क्या percentage होगी. It is unbelievable. It is 99%. So हमारी personality का 99% facet are those things that we don't know that we don't know. The rest, all 3 are just 1%. और again थोड़े से words चुराऊंगी यहाँ सदगुरु के, जो ये कहते हैं that I hope मैं टॉपिक से डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ. आई एम अवेयर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट मोर रेलेवेंट टुडे फॉर यू नो द लाइफ एंड द लाइफस्टाइल्स. एज ही सेज सदगुरु जगी वासुदेव, वो ये बोलते हैं कि देयर इज दिस, ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरी उस सृष्टि है, उसके अंदर एक ये प्लैनेट अर्थ है, उसके अंदर एक ये कंट्री इंडिया, उसके अंदर दिल्ली, और दिल्ली के अंदर एक सिटी, एक जगह पर एक के अंदर आप यू नो आप रह रहे हैं, और उसके अंदर तुम एक बहुत बड़े व्यक्ति हो. ये हमारा व्यक्तित्व को समझाता है एक तरह से कि सो बेसिकली दिस नो thyself इज दैट इफ वी हैव टू ट्यून ourselves to moral values, to ethics, if we think still that these things are valuable and relevant and that our existence relies on these,
then it is so very important to know thyself, because without which knowing others is not possible. And वही बात मैं दोबारा से बोलूंगी, your body is a mini universe, यत पिंड तत् ब्रह्मांड। और ये हिंदी और संस्कृत के जो टीचर्स हैं वो इन सब बातों को मेरे से कहीं ज्यादा अच्छे समझा सकेंगे, आई एम श्योर। सो एरिस्टोटल ने भी यही बोला, द मोर यू नो द मोर यू रियलाइज यू डोंट नो, कि जितना हम जानते चले जाते हैं उतना हमें पता चलता है कि हमें कितना नहीं पता। और जब हम इस पाथ पे चलेंगे तभी हम उन सारी एथिकल वैल्यूज और मॉरल्स को समझ पाएंगे। एंड बट देन सारी इम्बाइब कर ले तो सोच की डर लगता है, वो तो इतना बड़ा पेड़ था जिसके ऊपर इतनी सारी थी। बट द वे टू मूव टुवर्ड्स इट इज दैट अगर हम एक चीज का if we take charge of, you know, just one, like for example, I will speak truth. So if I speak truth, then I have to reach college on time. I cannot speak untruth कि सर मैं निकली तो टाइम पर थी पर ट्रैफिक मिल गया मुझे, so मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। I'll be more disciplined and more responsible, you know, just getting। तुमने सोचा कि ना आई हो तो बैठ जाओ। हाँ, अरे वो बात नहीं है, छत ऊंची करवाइए। Someone is जो भी करिए करिए। unmuted. Okay, thank you so much. Yeah. अभी दिखेंगे। So Aristotle said, the more you know, the more you realize you don't know. There are some golden words of wisdom. और ये एपीजे अब्दुल कलाम, इसीलिए इनको यथाशक्ति कहा गया। अच्छा, रवि सर की बहुत लंबी है, इंट्रोडक्शन नहीं अच्छी भी है। उनको इवैल्यूएशन टोटल बताना पड़ेगा ना, काम चलेगा सब, ये तो नहीं बताया गया था। हमारे तो चिपड़ी बंद हो गए थे ना, इसलिए प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जबरदस्त भूल जाते हैं। मैं वेट कर रही हूँ, कुछ लोग की आवाज आ रही है। मैम 2 मिनट दीजिए बस, मैम 2 मिनट दीजिए आप प्लीज। कन्वीनियंट ना रही वाला हटा, कन्वीनियंट हम सब में। आप बात समझिए, जिस समय आप वहाँ होगे ना, आपको पता होगा कितना टाइम देना है, उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद अनाउंसमेंट भी है, देखते हैं पहले झंझट तक पहुंचेंगे कहीं। Ma'am, kindly unmute yourself. We have hard muted everyone. Yeah, thank you so much. Yeah. Okay. So yeah, मैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के गोल्डन वर्ड्स ऑफ विजडम को रीड करके सुनाऊंगी, कि सिर्फ स्लाइड नहीं रखूंगी सामने। He said, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. इसका भावार्थ क्या है कि जब दिल के अंदर ईमानदारी और सच्चाई होगी तो हमारे कैरेक्टर में, हमारे बिहेवियर में खूबसूरती होगी। और जब हमारे बिहेवियर, हमारे एक्ट्स, हमारे कैरेक्टर के अंदर खूबसूरती होगी तो अमन होगा, प्यार मोहब्बत होगा घर पे। और कहते हैं ना, जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम, घर में सुख शांति और प्रेम का वातावरण होगा तो पूरे देश में उसकी लहर फैलेगी। देयर विल बी ऑर्डर इन द नेशन, एंड व्हेन देयर इज ऑर्डर इन द नेशन तो देयर इज पीस इन द वर्ल्ड, इन द प्लैनेट। दैट इज व्हाट ही सेड। तो उन्होंने कैसे बोला कि हर इंसान के एक छोटे से अपने हृदय के परिवर्तन कर लेने से इट कैन इम्पैक्ट आउटसाइड वर्ल्ड। इसीलिए तो ऐसे कई बार होता है कि जैसे कि कई बार मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर हम लोग ऐसे सोचते हैं कि मंत्रों से इतना असर नहीं होता,
लेकिन मंत्रों का बहुत प्रभाव होता है। बहुत सारी कंट्रीज हैं यूरोप में, स्वीडन, नॉर्वे, जो अपने स्कूल्स में ओम का उच्चारण और कई सारे मंत्रों का उच्चारण सुबह स्कूल स्टार्ट होने से पहले करते हैं। ताज्जुब की बात है कि इंडियन स्कूल्स और कॉलेजेस में होना तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारी तो ये धरोहर है, लेकिन फिर भी हमारे इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में सब जगह ये नहीं है। अब तो फिर भी थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर हमारे की मोदी जी की योग को बहुत प्राथमिकता दी गई है, और अब वो स्कूल्स कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस काफी लार्ज स्केल पे हो रहा है, विच इज रियली क्रेडिट वर्दी, बहुत बहुत थैंक्स और आभारी हैं हम सब उनके। एक ये छोटी सी बात कि मंत्रों से भी हम अपनी शुद्धि कर सकते हैं। मैं अभी मैम ने बताया कि मेरे बारे में कि मैं थोड़ा बहुत योग भी सिखाती हूँ, तो जब मैं कई बार देखती हूँ कि अगर मंत्रों की बारी आती है तो लोग कहते हैं नहीं मैम वर्कआउट करते हैं। तो मैं कहती हूँ भैया शुद्धि जो है वो मन से शुरू होती है। व्याधि मन के अंदर जो है, इट्स ट्रबल, मन के अंदर जो ट्रबल है इज द जेनेसिस, इज द रूट कॉज of all ailments, diseases. It's not the food and the external environment. उसका है असर, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं है, पर वो लिमिटेड है। लार्जली वो जो कहते हैं ना इम्यून सिस्टम जो है वो सारा हमारे अंदर। सो द मोर रिलैक्स्ड एंड काम वी आर, हैप्पियर पर्सन वी आर, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर होती है, और एक्सटर्नल जो भी आता है हम उसको झेल पाते हैं। सो अगेन द रेलेवेंस। और अंदर शुद्धि कैसे होगी? हमारे आचार, विचार, व्यवहार, again coming back to moral values and ethics. Okay, again another story. There was a very small boy जिसको रेसिंग का बहुत शौक था, और वो अपना रेस में गया, वहां बहुत सारे बच्चे थे, कई राउंड्स हुए, हर बार वो जीता, वो जीतता गया, और उसके मेडल्स इकट्ठे होते गए, और उसके ग्रैंडफादर भी थे वहां, वो चुपचाप बैठे। तो आता है वो ग्रैंडफादर, कहते हैं आप सब लोग इतनी ताली बजा रहे थे, सब कुछ था, आप चुप बैठे हुए थे, तो ये क्या मतलब आपको मेरी जीत नहीं लगी क्या, विनिंग नहीं लगी? तो वो कहते हैं एक रेस और लड़नी है तुम्हें। तो कहता है ही वाज सो कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ कि जितनी मर्जी करवा लो, मैं तो सब में जीतने ही वाला हूँ। एंड देन साथ में किसको खड़ा कर दिया? वन ओल्ड लेडी एंड वन ब्लाइंड पर्सन। उन्होंने कहा कि अब भागो तुम, और रेस हुई। वो दो तो बेचारे वहीं के वहीं खड़े रह गए, दाएं और बाएं, और बच्चा आगे दौड़ के क्रॉसिंग लाइन तक पहुंच गया। But this time nobody clapped. So the child was again I stood first. Why did not anybody clap? So he again went to his grandfather and asked कि what happened? आपने तो इस बार ये किसी ने भी ताली नहीं बजाई, पहले तो आपने नहीं बजाई थी, इस बार बाकियों को भी कुछ हो गया। So his grandfather said, तुमने एक चीज मिस आउट करी, तुम इन दोनों को अपने साथ लेकर दौड़ो और अब रेस करो। तो उसको लगा ठीक है अब ये बोल रहे हैं तो मान लेता हूँ। तो उसने अपनी आखिरी रेस के अंदर he held the hands of the old woman and the blind man, and रेस उतनी फास्ट तो नहीं हुई, it took much longer time, but it had the longest applause at the end, and that is because वो सबको साथ लेकर चला। So in this world, it is not only about winning. I will not say that success is not important, not at all. Success is very important in life, and everybody wants to be successful, but it's not कि आप कहाँ पहुंच गए, because somewhere there, if you reach top of the ladder, but you're all alone there, then there's no point. Steve Jobs, he also said the same thing. जब वो कैंसर से उनकी जान जा रही थी, उन्होंने यही बोला कि इस समय मैं ये एहसास कर रहा हूँ कि मैंने जीवन भर एक बड़ी कंपनी और धन दौलत एकत्रित करा, बट पीछे बहुत लोगों को छोड़ दिया। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया है। सो दिस इज वन लेसन टू बी लर्न, दैट तब समाज का उत्थान तब है जब हम सबको साथ लेकर चले। और इसी प्रकार से और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे अब्दुल कलाम जी का ही एक और किस्सा बताऊंगी। श्रीहरिकोटा में SLV3 का लॉन्च था,
और सब जानते हैं कि ही वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड सतीश धवन जी उस समय ही वॉज द एरोनॉटिकल इंजीनियर जिन्होंने सारा हैंडल किया था, जो उसका इंजीनियरिंग पार्ट था। एंड जब वो एकदम जब लॉन्च करने लगे तो जो कंप्यूटर्स थे उन्होंने ये इंडिकेट किया कि इट विल नॉट सक्सीड, हॉल्ट, रोक दो, मिशन को अबॉर्ट कर दो। बट ही, अब इट वाज हिज डिसीजन कि वो आगे चले या ना चले। ही टुक अ डिसीजन दैट वी विल प्रोसीड, वी विल नॉट स्टॉप, एंड उन्होंने लॉन्च कर दिया। उसकी फर्स्ट स्टेज ठीक गई और सेकंड स्टेज पे वो ऊपर स्पेस में जाने के बजाय इट लैंडेड इन द बे ऑफ बंगाल। इट क्रैश्ड, इट वाज एन अनसक्सेसफुल, इट वाज अ फेलियर। वहां उन्होंने ये बात बोली कि सक्सेस हैंडल करना तो सबको आता है, लेकिन फेलियर्स हैंडल करना सबको नहीं आता। तो फेलियर्स हैंडल कर पाना, और अगेन यहाँ पर हमारा मॉरल वैल्यू सिस्टम आता है कि हम फेलियर्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। द ब्यूटी लाइज इन के कितनी बार गिरे वो इतना अहमियत नहीं है, हम गिर के कितनी बार उठ पाए और कितनी क्विकली उठ पाए, वहां हमारी महानता है। और यही उन्होंने बात बोली। और उसी स्टोरी में एक दूसरी वैल्यू भी बताऊंगी कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात हुई कि जब वो बे ऑफ बंगाल में पहुंच गया, जो सैटेलाइट और रॉकेट और सब जो उसके अवशेष थे, तो सतीश धवन जी ने जो ओनस था, जो बर्डन था, ही टुक इट ऑन हिमसेल्फ, और उन्होंने कहा कि आई विल स्पीक, और उन्होंने बोला और अपने ऊपर ये लिया। और जब नेक्स्ट ईयर जब दोबारा ये लॉन्च किया गया और जब सक्सेसफुल हुआ, तब की बारी उन्होंने अब्दुल कलाम जी को आगे कहा कि अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कीजिए और अब आप इसको हैंडल कीजिए, बिकॉज वो एक सक्सेस का मोमेंट था। सो अगेन द ग्रेशियसनेस एंड द बिग हार्ट, कि जब गलती हुई टू ग्रेशियसली ओन इट अप, और जब ये बारी आई कि एक्कोलेड्स लेने की बारी आई, तो दूसरे को हैंड ओवर कर दिया कि जीत तुम्हारी हो। अब्दुल कलाम सर के बारे में और कितनी भी बातें कही जाएं कम है। तो ये एक पर्सनालिटी है जो, जिनसे एक बार किसी ने ये पूछा था कि आप साइंटिस्ट हैं इतने बड़े, आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं, यू ऑथर्ड सो मेनी बुक्स, यू बिन ऑल्सो प्रोफेसर, सो कौन सा ऐसा काम है जो आपको सबसे ज्यादा भाया है? और उनका आंसर आई थिंक सबको पता होगा कि उन्होंने कहा टीचर का, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बताया कि जो उनके बचपन में एक टीचर थे, जब वो क्लास में वॉक इन करते थे, तो जिस आभा के साथ और जो टीचिंग्स उन्होंने उनको प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से आज वो बन सके जो वो आज है, तो उन्होंने टीचर होने का जो अपना क्वालिटी थी उसको सबसे ज्यादा अहमियत दी। और हम सब यहाँ पर टीचर्स हैं, तो मुझे लगता है हमारी ये कम्युनिटी, आई रियली टेक प्राइड इन बीइंग अ टीचर, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू डू, बिकॉज हमारे पास वो पोटेंशियल है, हमारे वी हैव बीन ब्लेस्ड विद दिस कि हम वी कैन टच ऑन द लाइव्स of hundreds and lakhs, if not millions of people across. और हमारे को ये काम बहुत ही जिम्मेवारी और बहुत ही एथिक्स के साथ ही अगर हम इसको निभाएं तो ही इसकी ब्यूटी है। जनरली कहा जाता है कि दो ऐसे प्रोफेशंस हैं, एक डॉक्टर्स और एक टीचर्स का, विच आर रियली रिगार्डेड हाईली। और मुझे तो लगता है कि टीचर्स तो, क्योंकि हम तो बिल्कुल न्यू बॉर्न से हमारी उनके साथ लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर्स तो शायद लेटर इन लाइफ एंटर करते हैं, नॉट अंडरमाइनिंग देम, प्लीज मेरी ये भावना बिल्कुल नहीं है, डोंट मिस इंटरप्रेट मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई थिंक इट्स दीज आर द मोस्ट नोबलेस्ट ऑफ ऑल प्रोफेशंस दैट एनीबडी कैन हैव। आई थिंक मैं काफी बोल ली हूँ, काफी कुछ मैं कवर भी कर चुकी हूँ। Just going over the slides, just to ensure to see, check कि मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। मैंने बल्कि एक वीडियो भी रखी थी नाजीज के टाइम की,
कि दिखाने के लिए कि कितना अत्याचार किया गया था उस समय। और yeah, I think I have covered more or less most of the things. So किसी कोई questions है? So I think can we would you want me to continue a little bit more? I can continue, or you want me to stop here or move on to if there are any questions? Thank you, Anjali, for really taking us to the wide spectrum of human values and ethics. We are very happy to listen to you. Am I audible, Anjali? मैं अपनी वीडियो शेयरिंग स्टॉप करना चाहूंगी. So, yes, ma'am. Anjali, thank you so much for a very enlightened lecture. But now I want to ask you. You have talked about so much personalities. You have expressed in the form of the movies, which are always contemporary, and they give you the vision of the contemporary world. Dear Dr. Anjali, we would like to know how these values, how could we integrate in our colleges so that we can put under the 7th criteria of NAC. Yes. What such values we should add, or the activities we should go for? Right. Your lecture, your just such suggestions will surely help us. Definitely, ma'am. I'll do my best to throw light on this very interesting point that you have raised. So आपने बोला कि बच्चों के अंदर कैसे इंटेग्रिटी और आप अपने नैक के प्रोसीजर्स में और जो भी IQAC कमेटी वगैरह जो भी सब करते हैं उसको कैसे हम टैकल करें कि इट बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ अस एंड खाली एक वो थियोरेटिकल ना रहे. जहाँ तक कि थियोरी की बात है, सो मोस्ट इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस हैव दिस सब्जेक्ट which is called human values and professional ethics. तो course content wise तो वो cover किया जा रहा है और बच्चों को, और इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक माइंड बॉडी सोल करके भी एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर गांधीयन फिलॉसफी और इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के और टीचिंग्स सिखाई जा रही थी. जैसे वो पूरी बुक माय एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रुथ को भी महात्मा गांधी जी की जो बुक है वो भी पढ़ाई जा रही थी. बट कहीं ना कहीं आप सही कह रही हैं कि हम कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं. हम क्वेश्चन आंसर लिख देते हैं, हम एग्जाम पास कर जाते हैं, और ज्यादातर इस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं. सो बच्चों के जैसे ही क्वालिफाइंग मार्क्स मिले, बाकी मार्क्स तो जो होते हैं वो हमारे मेन जो कोर पेपर्स होते हैं उन्हीं के होते हैं. तो ये तो हम कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे कैरेक्टर और हमारे पर्सनालिटी में वो उतर कर नहीं आता. और ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है. आई थिंक ये उतर कर आए. गुरु जो कहते हैं ना, अगर मैं योगिक कल्चर में योग से मैंने जो सीखा है, तो कहते हैं सबसे पहला गुरु हमारे माता पिता होते हैं. तो जो पहली लर्निंग हमारी है, जो बेसिक जो फाउंडेशन है, वो एट होम है एंड विद पेरेंट्स है. सो टीचर्स का रोल बहुत अहम है, लेकिन वो लेटर इन स्टेज आता है. इवन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आप देखें तो बहुत बार बच्चे भी ये बोलते हैं, जैसे कई बार कॉलेज में बच्चे आ जाते हैं तो उनसे बात करो तो कहते हैं, तो बोलते हैं मैम हमारे को ना अपनी वो वाली स्कूल वाली मैम अब बहुत याद आती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत तंग करती थी, मार्क्स काटती थी, बट मैम हमें आज वो याद आती हैं. वो हमारी बहुत केयर करती थी और बहुत प्यार करती. Ma'am, kindly unmute yourself.
Am I unmuted now? Yes, ma'am. मैं कब म्यूट हुई मुझे पता नहीं चला, सॉरी. अभी Just a second ago. Okay, Just a second. मेरे को लगा कि बोले जा रही थी. मेरे को वही मैं सोच रही I could see the green outline to my window, but yeah, okay. So yeah, तो घर से तो शुरुआत है ही. As parents की जगह कोई नहीं ले सकता. तभी when we opt to become parents, काफी बड़ा क्वेश्चन होता है कि am I equipped enough to be a parent? कि वो जो पेरेंटिंग और वैल्यूज के अंदर पेरेंटिंग भी एक थी. अगर एक क्लाउड अगर आप वहां ध्यान देते तो वहां पर पेरेंटिंग भी है. बिकॉज पेरेंट्स होते हैं वो अपना पूरा जीवन काल अपना सर्वस्व लगवा देते हैं इन रियरिंग किड्स. बट मैं थोड़ा सा यहाँ पर कहना चाहूंगी, आज के टाइम पर 2 साल का बच्चा और उसके हाथ में होता है मोबाइल, और पेरेंट्स ऐसे बंधे हाथ बिल्कुल सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि क्या करें, सबके पास है, इसके बिना गुजारा नहीं है. बट मैं बोलना चाहूंगी इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पर्सनालिटीज, मूवी स्टार्स कितने होते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे पिक्चर्स नहीं देखते, और उनको हम वैसे पालने की कोशिश करते हैं जैसे नॉर्मल बच्चे हों. आजकल थोड़ा सा कल्चर और समाज, सोसाइटी में ये होड़ हो चुकी है कि अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, और उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने में ये सारी चीजें. एंड वेरी सॉरी टू से, आई डोंट इंटेंड टू हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग्स, बट पेरेंट्स हम अपनी जान छुड़ाने के लिए भी बच्चों को लैपटॉप्स और फोन्स देते हैं, क्योंकि अदरवाइज बच्चे इतने स्मार्ट हैं, दे आर सो डिमांडिंग. क्योंकि आज एक बच्चे को हैंडल करना, इट्स लाइक 24 आवर बिजनेस. उनके माइंड इतने डेवलप्ड, इतने शार्प हैं that they want your 100% attention, and the mothers are working, the fathers are working, 2 jobs, सबको अपने professions में भी escalations चाहिए. उस सबको देखते हुए फिर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एंड देन वो साइकोलॉजी में हमारे को कहा जाता है कि इट इज द क्वालिटी टाइम एंड नॉट द क्वांटिटी टाइम. बट आई ट्रूली बिलीव इट्स बोथ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी. और वो क्वालिटी टाइम और हम अपने को कितना अवेयर और कितना जागरूक और कितना फिल्ड विद वैल्यूज रखें कि हम बच्चों को भी वो दे पाए, ये एज पेरेंट्स. तो ये तो पूरे समाज के उत्थान की बात है जो मैम ने छेड़ी है. तो ये अगर हम छोटे मोटे स्टेप्स कॉलेज में ले भी लेंगे, और उसका वो मेजर, वो जिसे कहते हैं ना एक आंदोलन होना, वो वाला इम्पैक्ट आना आ पाएगा कि नहीं, आई कांट से. आई रियली विश एंड प्रे कि ऐसा हो. बट तो अगेन आई गो बैक टू माई आंसर कि पेरेंट्स एंड देन टीचर्स. सो एज टीचर्स, व्हाट एग्जाम्पल वी सेट बिफोर आवर स्टूडेंट्स. मैं तो अपना ही एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दे सकती हूँ जो मैं खुद करती हूँ. तो मैं तो बहुत बार अपने बच्चों के साथ अपनी ही कमियां शेयर करती हूँ, और मुझे लगता है वो जैसे मैंने सबसे पहले दिन बच्चों को जाके ये बोला था, मैं कहा मैं सारी जिंदगी मेरे में एक कमी रही है कि मैं अक्सर लेट पहुंचती हूँ, कि मैं 5-7 मिनट, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे टाइम मार्जिन लेके चलूंगी कि अच्छा मुझे ड्राइव करने में 1 घंटा लगेगा, तो मैं 1 घंटा 10 मिनट्स का मार्जिन लेके चलूंगी और फिर 5-10 मिनट्स लेट हो जाऊंगी. और मैंने कहा मैंने इसको इतना भुगता है अपने लाइफ में, बिकॉज देन यू मिस आउट ऑन सो मेनी थिंग्स. आप यही 10 मिनट पहले पहुंचते हो, उसका जो आपके ऊपर जो आप जिस मीटिंग में हो या जहां हो, जो आप अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हो, you can't compare it. जब आप लेट पहुंचते हो, you are in humdrum and lost and everything. So I set my exam. मैं अपनी कमियां बच्चों के सामने शेयर करती हूँ. That is one thing जो मैं 1-to-1, तो मैं अपनी क्लासेस के अंदर 1 घंटे का लेक्चर होता है, पर जरूर 5-7 मिनट मैं शुरू के, जैसे बच्चे आ रहे होते हैं लेट या कुछ, जरूर आई टच अपॉन एरियाज जो उनकी डे टू डे लाइफ्स, उनके एजुकेशन, उनकी पढ़ाई के ऊपर emphasis देते हुए, and then I launch on to the main content of my classes. So ये तो हुआ टीचिंग से. इसके और आगे चलते हैं, तो आपने बोला कि कॉलेज में इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टफ, तो मुझे लगता है कि कॉलेज के अंदर बहुत सारी कमिटीज होती हैं, तो जितना इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ हम बढ़ाएंगे,
अगेन थोड़ा वर्कलोड बढ़ेगा टीचर्स का, बट जितना 1-to-1 इंटरेक्शन, सिर्फ पेपर वर्क नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए ही नहीं, सिर्फ एक होता है कि एवरीथिंग इज लिस्टेड, जॉटेड डाउन ऑन पेपर एंड स्क्रिप्टेड, नॉट लाइक दैट, बट रियलिटी में कि हम बच्चों तक एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। अगेन मैं अपना ही एग्जांपल शेयर कर सकती हूँ कि जैसे हमारे कॉलेज में हमारी कॉमर्स की एसोसिएशन आक्रिया है, और अक्सर क्या करते हैं, कई बार ये होता है कि लाइक देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑफ टाइम, सो यू डोंट वांट स्टूडेंट्स टू मिस आउट ऑन क्लासेस, तो आप जो कुछ बच्चे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम उन्हीं को ही बार बार वो काम देते हैं, बेटा आप अच्छे हो, आप ही डिबेट में आप चले जाओ, स्पीकर जो स्पोक्स पर्सन का काम है, कंपेयरिंग का काम है, आप ले लो, आप डांस में अच्छे हो आप, तो वो तो फिर वो जो सीमित ही रह जाएंगे ना बच्चे, उनके अंदर फिर वो एक्स्ट्रा गुण तो नहीं आ पाएंगे। तो एक्स्ट्रा गुण आए उसके लिए वी नीड टू क्रिएट टीम्स, और हर टीम में जैसे एक वो बेस्ट परफॉर्मर वाला बच्चा और उसके साथ 2-3 और जो उसको देखकर लर्न करें, ऐसी टीचर्स भी, सो मेकिंग स्मॉल ग्रुप्स, continuously having workshops, थोड़े नंबर्स की बच्चों के साथ, और उनके उनके ग्रूम करने की कोशिश करना कि वो नए नए स्किल्स सीखें। और एक चीज और यहाँ ऐड करना चाहूंगी, देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फोसिस कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, सीए बनो, तो अगर तुम ये नहीं बने तो तुम कहीं के नहीं। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो, मार्क्स करो और ये सब बनो, पर साथ में बोलती हूँ कि जीवन का ध्येय सिर्फ ये बनना नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने बहुत सारी आर्ट एंड कल्चर की चीजों को पीछे छोड़ दिया। सो द रीओरिएंटेशन हैज टू कम इन ईच पर्सन्स माइंड कि ये ऐसे ही नहीं, मुझे लगता है जो पहले समाज में जो वर्ण भी थे और जो काम जो एट्रीब्यूटेड थे वो उनके हुनर के हिसाब से थे, और जो हिस्टोरिकल जो टीचर्स जो ये सब पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, मेरे से कहीं ज्यादा वो इस बात को समझते होंगे और समझाते होंगे कि जो वर्ण थे, वो जातियां, वो ऑन द लेवल ऑफ स्किल थे, कि जो पढ़ाने में जिनका स्किल है या जिनका जो स्किल है, इट वॉज स्किल प्रधान। इट वॉज नेवर कि आप इस घर में पैदा हो गए तो आप ये बन गए, इट वॉज नेवर सो। ये तो ओवर द इयर्स थिंग्स गॉट डिस्टॉर्टेड, तो वो जो डिस्टॉर्शंस इतनी सारी आ गई हैं, वी नीड टू लुक इनटू दोस डिस्टॉर्शंस, और ये तो बिट बाय बिट, जैसे कहते हैं ना, घड़ा एक एक बूंद करके भरता है। सो वो ऑनेस्टी, वो ईमानदारी, नेपोटिज्म, वो एक एक चीज हैज टू बी इम्प्रूव्ड अपॉन, कि ये सब हो सके। बट एक चीज मैं ख्याल मैं जो पिन पॉइंट करूंगी वो ये कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पीपल, ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऑल टीचर्स, एंड अंदर से वो खुशी हो, इंसेंटिवाइज, किस कहते हैं ना, यू इंसेंटिवाइज कि आप दैट यू लुक फॉरवर्ड टू अपॉर्चुनिटीज। एक ये भी व्यू पॉइंट होता है कि मेरे सर पे मुसीबत आ गई और मुझे ये करना है। एंड जब मुझे ये, जैसे मुझे टॉपिक दिया गया, दिस टॉपिक इज सो क्लोज टू माय हार्ट एंड इट इज सो डियर टू मी कि मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि मुझे इसके लिए पढ़ना पड़ रहा है या स्लाइड्स बनानी पड़ रही हैं। मतलब मैंने खुशी खुशी राजी राजी ले लिया और धन्यवाद दिया कि मतलब आप सबका शुक्रगुजार है कि आपने मुझे ये मौका दिया। तो मुझे लगता है कि पर हम सब यही देख सकते हैं कि पूरे इंडिया, पूरे समाज, पूरे कल्चर, ह्यूमैनिटी के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई थिंक इट इज, हर एक को हम इतना इंस्पायर करें। मैम आप, किरण मैम, आप ये कर सकती हैं कि आप हर टीचर को इतना इंस्पायर करें, इतना मोटिवेट करें, और स्टूडेंट्स को भी, कि वो खुद दौड़ दौड़ कर आपके पास आए कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स करनी तो बहुत आसान होती हैं, जबकि उसमें भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बट दिलों को कन्वर्ट कर देना, कर पाना थोड़ा कठिन है। और इससे मुझे एक याद आ रहा है, किसी ने एक स्टडी करी थी, मुझे उनका नाम भूल रहा है, हाँ जी याद आ गया, पवन कुमार वर्मा जी। सो पवन कुमार वर्मा जी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने बोला कि इन ऑल आवर IITs and IIMs we have overdeveloped minds
but underdeveloped hearts. तो माइंड्स तो ओवर डेवलप हो गए, लेकिन उन ओवर डेवलप्ड माइंड्स आपके पास बेस्ट ऑफ टीचर्स एंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे ओवर डेवलप्ड, लेकिन अगर हार्ट्स अंडर डेवलप्ड रह गए तो वो कंट्रीब्यूशन और वो इंटेग्रिटी ला पानी वुड बी चैलेंज। बाकी ये है कि कमिटीज को हम जितना एक्टिवेट कर सकें, स्टूडेंट्स को जितने इंसेंटिव्स दे सकें, और जितना टीचर और टॉट रेशियो को मैनेज कर सकें, क्योंकि बहुत ज्यादा जब स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो टीचर्स की भी फिर लिमिटेशंस हो जाती हैं। थोड़े स्टूडेंट्स होते हैं तो हम उनको हैंडल अच्छे से कर पाते हैं। सो आई थिंक लॉट डिपेंड्स ऑन दैट टू। और पर्सनली मुझे लगता है कि रिसोर्सेज से ज्यादा हमारी इंक्लिनेशन जो होती है दैट मैटर्स। और अगर आपकी जैसे इंक्लिनेशन है, जो कि आपके क्वेश्चन में पता चल रही है, so I'm sure you will be able to do many more things. And I'm not very sure whether I've been able to handle your question adequately well, but I've tried my best. Really, very, very nice. Because all our these faculty development program is being conducted, keeping in view the yes, in accordance with the NAC AQAR, which the people are preparing and ultimately submitting by 2022. Right. This human values and ethics is one of the important questions in the 7th criteria. So yes. What more you can add to your institution, or how you justify that you are keeping in mind the human values and ethics, and then you are conducting your various activities, yes, pension activities, maybe something in the curriculum or in the teaching learning aids, means across the seven criteria, how you are taking care of it. But the way you have told us about the ethics and the moral values and the various aspects, and we could now capture the list of pictures or the movies, many of which we have not seen. So that is a really wonderful thing, sir. So one of the point I hope my colleagues can add, that we can show or we can keep in library some of the movies or the videos which can depict the human values, and whenever your students in some extension activity, you can show those. So this is the points we are picking up from your lecture, that this is the way we can inculcate or we can add to our college what we can do to keep in mind the human values and ethics. मैम हैट्स ऑफ टू यू, आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा, क्योंकि पिक्चरों के थ्रू तो हम बहुत ज्यादा बच्चों को प्रभावित कर लेते हैं। एक छोटी एनिमेशन बच्चों की मूवी है कंग फू पांडा, मुझे तो लगता है उसके पार्ट्स अगर देखते हैं तो लगता है पूरा गीता का ज्ञान ही 1 2 3 पार्ट्स में आ गया। लाइक यू नो, इतना और इतनी सरलता और हंसते हंसते बच्चे उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। नॉट ओनली किड्स, हम बड़े भी हो जाते हैं पर हमारे दिल मुझे लगता है बच्चे जैसे ही होते हैं। सो इट यू कैन स्टिल टच अपॉन द हार्ट्स ऑफ पीपल कोई भी उम्र में हो। Areas which you have touched, whatever the deliberations have been done through you, we have really learned that how we can put it into our reports and how we can put it in our system, so that we could qualify or we can justify the human values and ethics. So it's very nice to hear a wonderful resource persons today. I hope my NAC coordinator or IQAC coordinator will give the formal thanks to you, ma'am. We are happy to be with you this evening. I'm obliged to you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It was a wonderful session, and though there are no questions, but still if there will be any question, we'll mail the same to you. Sure. So good evening everyone present here, Honorable Resource Person Dr. Anjali Bhatnagar, our worthy Principal Dr. Kiran Agra, and all participants. It is such an honor for me to get the opportunity to thank you all dignitaries on behalf of the IQAC of M.D.S.D Girls College.
I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. My deep sense of appreciation for Dr. Bhatnagar for telling us value of human values and ethics. We all are inspired by your great words, ma'am, and you have reminded us teachings of Bhagavad Gita, which always instill moral values as well as spiritual values along with hard work among all. I extend my gratitude to our Honorable Dr. Anjali Bhatnagar to take out time from her busy schedule to grace the event. Thank you for inspiring and encouraging us with your words on this special day. A special thanks to Dr. Kiran Agra, Principal cum Assessment and Accreditation Ambassador, for providing immense support to make the webinar successful. I extend my gratitude to Mrs. Nishu Bansal, NAC Coordinator, for her sincere support throughout the event. I am thankful to the IPS volunteers for working hard for the past many days to make this day successful. Thank you everyone once again for making it a great success. Thank you, ma'am. I have also shared feedback link in the chat box. You can fill the same tomorrow morning. Kindly join us at 10 o'clock. Thank you, ma'am. Thank you, all of you. Bless you all. Thank you. Keep smiling and perform well. Thank you, Kiran ma'am. Thank you very much. Thank you so much. Really a very precious and most happy moments we spent with you. Ma'am, On it's such a difficult topic. it's my For privilege. which you really elaborated the way one can. Thank you so much, Dr. Anjali Bhatnagar. Thank you very much. Always remain connected with us. Thank you all for giving such a patient listening and and namaste, the higher self in you.